All right? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Bol. Kantra Srimad Bhagavatam ki Om Jnana Tamarandasha Ganachana Shalakaya Chakshun Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Gaur Govinda Swami Namane. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachane Devashesha Shunyavadi Pashata Devshatani. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Shri Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Are you awake? Yes. Ab jaage? So other day we were discussing about what is Krishna interested in. तो दूसरे दिन हम चर्चा कर रहे थे कृष्ण को किन विषयों में रुचि है And we were quoting from Srimad Bhagavatam, और हमने श्रीमद् भागवतम से बात की where Krishna himself was telling Uddhava जहाँ कृष्ण स्वयं उद्धव से कह रहे हैं the only thing that pleases him, एकमात्र चीज जो मुझे प्रसन्न कर सकती है that satisfies him, संतुष्ट कर सकती है is pure, unalloyed devotional service, uninterrupted. शुद्ध अमिश्रित भक्ति बिना किसी रुकावट के And they're not so interested in karma yoga, jnana yoga, और उनको किसी भी कर्म योग ज्ञान योग में रुचि नहीं है mystic yoga, योग अष्टांग study योग of the Vedas, और वेदों के अध्ययन में austerities, तपस्या giving in charity, दान cultivating knowledge. ज्ञान All of these other different processes, Krishna is not so interested in. ये सारे अन्य किसी प्रक्रिया में कृष्ण को कोई रुचि नहीं है They're not so pleased. उतने प्रसन्न नहीं होते हैं And Krishna himself is telling like that और कृष्ण स्वयं ऐसा कह रहे हैं to his friend, devotee Uddhava. अपने मित्र अपने भक्त उद्धव को So we discussed this in class of the day, Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम से पिछले दिन हमने इसके ऊपर चर्चा की Then I noticed at night time, my Gurudev, one disciple is putting out the quote of the day. तो मैंने देखा कि एक भक्त जो है मेरे गुरुदेव के कोट ऑफ द डे बताए हैं उसमें And I was so surprised because the quote of the day was exactly that same shloka from Srimad Bhagavatam, 11th canto. और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया जब मैंने वो कोट ऑफ द डे देखा वो उसी श्लोक के ऊपर चर्चा थी जिस पे हमने चर्चा की क्लास में So it gave me a lot of faith मुझे बहुत श्रद्धा मिली वो देखकर that Guru and Krishna, they like this topic गुरु कृष्ण को ये विषय बहुत पसंद and है that they're inspiring us to understand this topic. और वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं ताकि हम इस विषय को समझ सकें Because the whole point of Krishna consciousness is to understand what pleases Krishna. क्योंकि पूरे कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य है ये समझ पाना कृष्ण को क्या प्रसन्न कर सकता है And those persons who are interested in that and trying to understand how to do that, और जिन व्यक्तियों को इनमें रुचि है और वो समझने का प्रयास कर रहे हैं इसको कैसे किया जा सकता है and who are doing that, और जो ये कर रहे हैं they are the most dear to Krishna. वो कृष्ण को सबसे प्रिय हैं And Krishna said to Arjuna, because you are really my Shuddha Bhakta और कृष्ण ने अर्जुन से कहा क्योंकि आप मेरे असल शुद्ध भक्त हैं and you're my friend मेरे मित्र हैं and you're not envious of me, मुझसे द्वेष नहीं करते हैं then Krishna said, I'll explain everything to you. तो कृष्ण ने कहा मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा Everything of the material world, सब कुछ भौतिक जगत का everything of the spiritual सब world. कुछ आध्यात्मिक जगत का Nothing will be left out. कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा The sum and substance, everything material and spiritual, that is Krishna. सारे भौतिक आध्यात्मिक जगत का सार कृष्ण है
Krishna is the source of all knowledge and intelligence. कृष्ण सारे ज्ञान और बुद्धि के स्रोत हैं। So if someone surrenders and depends on the source of all intelligence, on Krishna, then by Krishna's mercy he may come to understand what is required. और अगर कोई कृष्ण को शरणागत करता है, कृष्ण को समझने का प्रयास करता है, जो सारे ज्ञान और बुद्धि के स्रोत हैं, तो उनकी कृपा से वो अंत में सब कुछ समझ जाएगा। And with that knowledge, with that faith, Krishna says you'll overcome all the obstacles and difficulties in your life. और कृष्ण कहते हैं उस ज्ञान से, उस श्रद्धा से आप जीवन के सारी कठिन परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। Because we're blind, we don't know what to do, we're misunderstanding, making so many bad decisions. क्योंकि हम अंधे हैं, हम जानते नहीं क्या करना है, हम बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं हमारे अंदर, हमको पता नहीं क्या हमें करना है, इसलिए हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जीवन में। Then we're suffering because of those wrong or bad decisions. और हम उन गलत निर्णयों का दुख भोगते हैं। So Krishna says that you can listen to me, touch Trinu, I'll give you intelligence and faith, understanding, how to overcome all of these difficulties. और कृष्ण कहते हैं अगर आप मुझसे श्रवण करेंगे तत्श्रीनु, तो मैं आपको बुद्धि दूंगा, श्रद्धा दूंगा, कैसे इन सारी कठिन परिस्थितियों से बाहर आना है। And how to solve all of these obstacles of the material life. हमारे अपने भौतिक जीवन में भी जो हमारी कठिन परिस्थितियां हैं, हमें उनका भी समाधान करना है। And how to ultimately purify, liberate you. और कैसे हम अंत में शुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। And ultimately how you can understand me, come to me. और अंत में कैसे मुझे समझ सकते हैं और मुझको प्राप्त कर सकते हैं। And then Krishna says, but if you stay in your big false ego, कृष्ण कहते हैं अगर अपने बड़े मिथ्या अहंकार में रहेंगे, and pride, false ego platform, दंभ और मिथ्या अहंकार के स्तर में, and you think you have it all figured out, और आप सोचते हैं आप सब पता लगा चुके हैं, and you think you're managing quite nicely, और आप सोचते हैं अपने बहुत अच्छे से व्यवस्था चला रहे हैं, and we think we're very happy, we have no problem, we have no obstacles, no difficulties, हम सोचते हैं बहुत खुश हैं, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। then Krishna says, because of that pride and false ego, you'll not be able to hear me properly. कृष्ण कहते हैं इस दंभ और मिथ्या अहंकार की वजह से आप मुझे श्रवण नहीं कर पाएंगे। And if we're not hearing nicely, properly Krishna, Krishna Parampara, Shastra, अगर हम कृष्ण, कृष्ण परंपरा, शास्त्र से ठीक तरीके से श्रवण नहीं कर पाते हैं, only other thing is Maya. तो दूसरी चीज है जो वो माया। So one will purify and liberate, एक हमें शुद्ध करेगा, मुक्त बनाएगा, overcome all the obstacles and problems. सारी रुकावट, सारी समस्या से बाहर आ जाएंगे। The other will contaminate and degrade, और दूसरा हमें दूषित करेगा और हमें पतन की ओर ले which will जाएगा। lead to more misunderstanding and wrong decisions. और ज़्यादा गलत फहमियाँ और गलत फैसले हम लेंगे जीवन में। Will just complicate and disturb our life. हम अपने पूरे जीवन को जटिल बनाएंगे, परेशान बनाएंगे। Then so much no peace. कोई शांति नहीं। No peace means no happiness. कोई शांति नहीं मतलब कोई सुख नहीं। And just only anxiety and hankering, lamenting, suffering condition. सिर्फ चिंता, उत्कंठा, शोक करना, दुख में परिस्थिति हमेशा रहेगी। Now Krishna is the well-wishing friend of all living entities. तो कृष्ण सभी जीवात्माओं के शुभचिंतक मित्र हैं। And he said, I'm in the heart of every living entity. और वो कहते हैं मैं सभी जीवात्माओं के हृदय में स्थित हूँ। And based on your desire, that intelligence and faith will come from me. और आपकी इच्छा के आधार पे आपको श्रद्धा और बुद्धि मुझसे मिलेगी। If you desire me and you want to understand me, I'll give you intelligence and faith how to do it. अगर आप मुझ तक आना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो मैं आपको बुद्धि दूंगा, श्रद्धा दूंगा, कैसे आप उसको प्राप्त कर सकते If हैं। you want to remember me, I'll make you remember me. आप मुझे स्मरण करना चाहते हैं, मैं आपको स्मरण कराने में मदद If करूँगा। you want to forget me, I'll make you forget me. लेकिन आप मुझे भूलना चाहते हैं, तो मैं आपको भुलवा You'll दूंगा। forget your soul, you'll forget the supreme soul, you'll forget the Sanatan Dharma, अब आत्मा को भूल जाएंगे, परमात्मा, आपका सनातन धर्म भूल जाएंगे, and we'll run after other so-called Dharma, material, mental Dharma. और हम दूसरे धर्म, मानसिक और भौतिक धर्म के पीछे Of course, भागेंगे, it's a Kaitava Dharma, it's not the real Dharma. जो कहता वो धर्म है, असल धर्म नहीं। So Prabhupada said, the only thing a soul can do is desire. प्रभुपाद बताते हैं एकमात्र चीज जो आत्मा कर सकती है इच्छा करना। So what is our desire? तो हमारी इच्छा क्या है? Spiritual or material? आध्यात्मिक या भौतिक? And what is the strength of that और desire? हमारी इच्छा में कितनी शक्ति है? Krishna says, right now your intelligence is many branched. और कृष्ण बताते हैं अभी आपकी बुद्धि जो है अलग शाखाओं में बटी है। Right? You want Krishna, but you also want the Maya. आप कृष्ण चाहते हैं, लेकिन आप साथ में माया भी चाहते हैं। We're intrigued by the idea of Krishna Bhakti and understanding getting Krishna, but yet so much material desire is still there. हम आकर्षित हैं कृष्ण भक्ति की प्रक्रिया से, लेकिन अभी भी हमारे अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं। Krishna has his plan for us and Maya has her plan for us.
तो कृष्णा का योजना है हमारे लिए और माया का के पास भी हमारे लिए योजना है। Right now we're not fixed on which plan we want to accept. अभी हम स्थिर नहीं है कि कौन सी योजना को हम चुनने वाले हैं। So therefore our intelligence is splayed out. इसलिए बुद्धि जो है अलग-अलग शाखाओं में बट गई है। It's not the one-pointed intelligence. एक केंद्रित बुद्धि नहीं है। Krishna said, "Manmana bhava mad bhakto." Only think about me. Be my devotee. कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, सिर्फ मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। But my Gurudev would say, "You're crying for Maya. You're not crying for Krishna." मेरे गुरुदेव कहा करते थे आप माया के लिए रो रहे हैं, कृष्ण के लिए नहीं रो रहे हैं। I can't have it. I can't get it. I lost it. It's a crying for Maya. मैं ये पाप प्राप्त नहीं कर सकता, मुझे मिला नहीं, मैंने खो दिया, ये सब माया है। Like spoiled child, when they cannot get what they want, they're throwing some tantrums, some kicking and screaming. जैसे कुछ बदमाश बच्चे जो वो चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो हाथ पैर पीटते हैं और चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगते हैं। I want it. I want it. I want it. I want it. I मुझे want चाहिए, it. मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। So right now, Krishna says, if your intelligence is it's splayed out, many branched, your resolute determination to surrender and serve Krishna in bhakti will not manifest itself. तो कृष्ण बताते हैं अगर आपका बुद्धि इस तरह अलग अलग शाखाओं में बटी है आपकी भौतिक इच्छाओं की वजह से, तो आपका एक निष्ठ दृढ़ इच्छा भगवान को शरणागत करने का, कृष्ण को शरणागत करने का प्रकट नहीं हो सकता। It'll undermine faith and determination. आपका श्रद्धा और दृढ़ निश्चय को नीचे गिराएगा। So we're hesitating. इसलिए हम झिझक रहे हैं, We're doubting. हम संदेह कर रहे हैं, We're not going all in. हम पूरी तरह से अपना नहीं लगा रहे We're हैं, not trusting Krishna हम कृष्ण में विश्वास नहीं कर रहे हैं because intelligence is many branched, क्योंकि हमारी many बुद्धि desires. अलग अलग शाखाओं में बट गई है, बहुत सारी इच्छाओं में। So those desires are coming because of the sinful desires and sinful reactions. This causing ignorance and further sinful desire. तो ये हमारे पाप कर्म की इच्छाएं और पाप कर्म के फलों की वजह से हम अज्ञान में जा रहे हैं और उसी अज्ञान की वजह से हम और पाप कर्म कर रहे हैं और इस तरह हम निरंतर भोग रहे हैं। Krishna is the witness and the judge in everyone's heart. तो कृष्ण सभी के हृदय में न्यायकर्ता और गवाह हैं। And he's saying, okay, what do you want? और वो कहते हैं कि आप क्या What चाहते is हैं? your desire? आपकी क्या इच्छा है? And especially when you're chanting, what do you actually desire? और विशेष करके जब आप जप कर रहे होते हैं आपकी इच्छा क्या होती है? Are we praying for pure devotional service, how to reach Krishna and please Krishna and develop Krishna bhakti? क्या हम शुद्ध भक्ति के लिए कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं? कैसे कृष्ण के पास पहुंचना है? कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है? कैसा कृष्ण को प्रसन्न करना है? And how to get purified of all material desire, material contamination, all of these nasty things? और कैसे भौतिक इच्छाओं, भौतिक कर्मों से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं इन सारी गंदगी चीज़ों से? इसकी हम इच्छा कर रहे हैं? Are we desiring that? क्या हम इसकी इच्छा कर रहे हैं? And then how strong is that desire? और अगर कर रहे हैं तो उसकी इच्छा कितनी शक्ति है उसमें? Are we just saying from the lips? क्या हम बस होठों से कह रहे हैं? Oh yes, Krishna, you're God, I should serve you. ओ This कृष्ण is right, this is good thing. मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, ये सही चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। So technically correct, तकनीकी रूप से सही है, but not convincing. लेकिन ये आश्वस्त नहीं कर सकता। So we cannot cheat Krishna. हम कृष्ण को ठग नहीं सकते। So why we're not convincing Krishna? तो क्यों हम कृष्ण को आश्वस्त नहीं कर रहे हैं? Because mind's still stolen by illusion. क्योंकि मन को मोह ने चुरा लिया है। Because of bodily attachment शारीरिक आसक्ति and because of bodily relationships, और शारीरिक संबंध, we're caught up in serving in Maya's family, हम फंसे हुए हैं माया के परिवार की सेवा में, on the man-made dharma platform, मानव निर्मित धर्म के स्तर पे, not serving in Krishna's family platform. और कृष्ण के परिवार के स्तर पे सेवा नहीं कर रहे हैं, That's a Sanatan dharma. जो सनातन That's a धर्म bhakti platform. भक्ति स्तर है। So we've not yet decided. तो हमने अभी तक फैसला नहीं किया, We're not yet convinced. हम अभी तक आश्वस्त नहीं हैं, We're going back and forth. हम आगे पीछे जा रहे हैं। My Gurudev used to say like that. You're saying yes, yes, Krishna, oh Maya, oh Krishna, oh Maya, right? So we're being like a tennis match, तो back and forth. मेरे गुरुदेव कहा करते थे इस तरह हम आगे पीछे जा रहे हैं, कभी कभी हम माया कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ, फिर हम कृष्ण कह रहे हैं कृष्ण और माया, तो इस तरह से आगे पीछे, जैसे टेनिस के मैदान में खेल चलता है आगे पीछे। So we're expecting Krishna just to run and get the balls on the tennis match back and forth and just feed us all of these balls. Is this it? This is the thing? तो हम क्या चाहते हैं कि कृष्ण ऐसे टेनिस के मैदान में हमारे साथ आके हम एक एक बॉल को पकड़े और हमारी इच्छाओं को पूरा करें?
Oh Krishna, I want you. No. Actually, I want Maya. Oh no, I want you, Krishna. No, I want Maya. And Krishna just suppose he has nothing better to do. तो कृष्णा के पास और कुछ काम नहीं है, वो बस देखते रहेंगे, ओ कृष्णा मैं आपको चाहता हूँ, नहीं मेरी ये इच्छा है। इस तरह से क्या कृष्णा बैठ के बस देखते रहेंगे, उनके पास कोई और कुछ काम नहीं है। So Krishna says, okay, you figure it out. तो कृष्ण के पहले आप पता लगाओ क्या चाहिए। He tried. Okay, you don't want to hear me. Okay, you figure it out. आप प्रयास करो, अगर आप मुझे सुनना नहीं चाहते, आप मुझे भूलना चाहते हैं, आप पता लगाओ खुद से। Because he's telling Arjuna directly, you should do like this. वो सीधे अर्जुन को कह रहे हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। And Arjuna said, no, I cannot do like that. अर्जुन कह रहे हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। This is very difficult. बहुत मुश्किल है। Impossible for me. बहुत मेरे लिए मुश्किल है। So much sin I will incur. बहुत पाप करना पड़ेगा मुझे इसमें। I will suffer. मुझे दुख भोगना पड़ेगा। Generations of my ancestors will suffer. मेरे पूर्वज, मेरी पीढ़ियां सारे दुख भोगेंगी। So Prabhupada said Arjuna, he's very clever. तो प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन बहुत चालाकी कर रहे थे। Because he's skillfully avoiding the fight. वो कुशलता से युद्ध से बचना चाह रहे थे। He's quoting the Shastra, the Vedas, the culture, right? The demigods, the ancestors. वो शास्त्र, वेद, देवी देवता और जो अपने पूर्वज हैं उनके शास्त्र के आधार पे वो कुछ न कुछ वकालत कर रहे थे। The karma, this is not good for the future. कर्म के आधार पर बात कर रहे थे कि भविष्य के लिए So अच्छा नहीं these are होगा। all skillful avoidance of the surrender to Krishna. तो ये एक तरह से कुशलता से बचने का प्रयास कर रहे थे, कैसे कृष्ण को शरणागत ना करें। What is our excuse for not surrendering? हमारा क्या बहाना है कृष्ण को ना शरणागत? We just basically say no. हम बस सीधे कहते हैं नहीं करेंगे। Just purely stubborn. हम पूरी तरह से जिद्दी हैं। Prabhupada said like a rascal, you're acting like a rascal. और बात कहते हैं हम बदमाश हैं, बदमाश के जैसे काम कर रहे हैं। So some slap, some heavy punishment, reaction is required. तो कुछ थप्पड़, कुछ करारा झटका हमें चाहिए, कुछ दंड चाहिए। Don't blame me. I didn't make all of this up, you know. मुझ पे दोष मत डालिए, मैंने ये सब रचना नहीं किया है। I'm just repeating what I heard, what I learned. मैं वही दोहरा रहा हूँ जो मैंने सुना, जो मैंने सीखा। So Prabhupada said everything is based on your desire. वो बात कहते हैं सभी कुछ आपकी इच्छा पे आता है। And Krishna says if you genuinely desire to come to me and understand me and surrender to me and serve me, I'll give you intelligence and understanding how to do it. और कृष्ण कहते हैं अगर आप गंभीरता से मुझ तक आना चाहते हैं, मुझे समझना चाहते हैं, मुझे शरणागत करना चाहते हैं, मेरी सेवा करना चाहते हैं, तो मैं आपको बुद्धि दूंगा, श्रद्धा दूंगा, कैसे आप मुझ तक आ सकते हैं। And what is that intelligence? और वो बुद्धि क्या है? Is Krishna will dictate to your soul to accept someone in his disciplic succession as a bona fide spiritual master. कृष्ण आपको दिशा निर्देशित करेंगे किसी एक व्यक्ति को जो कृष्ण परंपरा में हो, उनको प्रामाणिक गुरु के रूप में चुनने के लिए। Prabhupada said that is Krishna's first installment of his mercy. प्रभुपाद बताते हैं ये कृष्ण का सबसे पहला कृपा है। He'll purify you enough and give you enough intelligence to dictate to you who you should accept as bona fide guru, his representative. वो आपको पर्याप्त मात्रा में इतना शुद्ध कर देंगे और आपको इतनी पर्याप्त बुद्धि देंगे कि आप पहचान पाएंगे कि कौन प्रामाणिक गुरु है आपके इस गुरु शिष्य परंपरा में। I'm just waiting for Krishna's intelligence. और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कृष्ण की बुद्धि मुझे मिले। How we're going to hear Krishna's intelligence? हमें कृष्ण की बुद्धि कैसे प्राप्त होगी? So Krishna gives insight, accept the guru. तो कृष्ण भीतर से बताते हैं इस गुरु को चुनो। Means bona fide guru, authorized guru, प्रामाणिक गुरु, in disciplic succession. जो शिष्य परंपरा में है। Prabhupada said, doesn't say try to find a guru, he said try to find the guru. प्रभुपाद कहते हैं एक गुरु को ढूंढने का प्रयास मत करो, एक प्रामाणिक गुरु को ढूंढने का प्रयास The करो। guru means disciplic succession. गुरु का मतलब है शिष्य परंपरा। Krishna says, what is it? Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te jnanam jnanena tattva dashyam. If you want to understand me in tattva, तो कृष्ण बताते हैं अगर आप तत्व में मुझे जानना चाहते हैं, in truth, तत्व में, mean really, actually, if you want to understand me. असल में आप मुझे समझना चाहते हैं, Krishna says, then go surrender to my representative bona fide spiritual master, my disciplic succession. कृष्ण बताते हैं जाओ जाकर शरणागत करो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का जो मेरे शिष्य परंपरा में आता है। Surrender there. शरणागत करो वहाँ। Render humble service. First service means to hear. और विनम्र भाव से सेवा करो और सेवा का मतलब है श्रवण।
Then if you're surrendered and you're serving in a humble state of mind, then naturally some inquiry will be there, some question will be there. अगर आप विनम्र भाव से शरणागत कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपकी कुछ जिज्ञासा होगी, आपके कुछ प्रश्न होंगे। The bona fide guru, he knows Krishna, he can hear Krishna, he's true representative of Krishna, tattva-dashi. अब प्रमाणिक गुरु कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण He को सुन knows सकते हैं, tattva, he knows Krishna. कृष्ण को जानते हैं। Krishna will use him and speak to you, explain everything to you. कृष्ण उनका इस्तेमाल करेंगे और उनके माध्यम से आपसे बात करेंगे और सब कुछ आपको बताएंगे। So Krishna says to show special mercy, I'll purify your contaminated heart and consciousness. तो कृष्ण कहते हैं किसी को विशेष कृपा देने के लिए मैं उसके हृदय के सारे कलमश से उसको मुक्त करता हूँ। To those who realize how filthy it is and you want to clean it up, उन व्यक्तियों के लिए जो ये पहले साक्षात्कार कर चुके हैं कि उनके हृदय बहुत गंदा है और वो उसको साफ करना चाहते हैं। because you want to understand about your spiritual life, understand about God, understand about Krishna. क्योंकि आप आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं। And ultimately we want to serve God, serve Krishna. और अंततः हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। We all came with the book in the hand with the address of the nearest ISKCON temple. Why? Because we wanted to go to learn how to serve God, how to serve Krishna. और सभी इस्कॉन मंदिर में आए, हमारे हाथ में कोई किताब मिली, उस पे जो है नज़दीकी मंदिर का पता लिखा था, हम वहाँ पहुँचे क्योंकि हम कृष्ण को जानना चाहते थे, कृष्ण को शरणागत और उनकी सेवा करना चाहते थे। Right? Krishna sent one of his devotees out to give you Prabhupada's books, right? कृष्ण ने किसी भक्त को भेजा आपके जीवन में और उसने प्रभुपाद की किताब आपको थमाई। And you read the book and you say, wow, this is not from this world. और आपने किताब पढ़ी, आपको पढ़ के पता चला ये इस जगत की किताब नहीं है। This is a transcendental platform of somehow coming into your life, into your consciousness. ये दिव्य ग्रंथ है जो किसी तरह से आपके जीवन में आई है, आपकी चेतना में आ चुकी है। And the Lord in the heart, the Paramatma, Chaitya Guru, he'll tell you, yes, this is me. I'm talking here in this Bhagavad Gita. और परमात्मा जो हमारे हृदय में स्थित हैं, चैत्य गुरु, वो आपको बताएंगे, दिशा निर्देशित करेंगे, ये मैं हूँ जो आपसे बात कर रहा हूँ किताब के माध्यम से। So same source of knowledge, intelligence, inspiration that's in the heart is also speaking Bhagavad Gita. तो जो ज्ञान और बुद्धि के सभी के स्रोत है जो हमारे हृदय में स्थित है, वही व्यक्ति भगवत गीता में भी बातें कह रहे हैं। As it is, यथारूप में authorized, then Krishna directly speaking to him. अगर वो ऑथराइज्ड है तो कृष्ण वहाँ सीधे वहाँ से बात करेंगे। Then as you're reading Krishna's words, instructions, coming in contact with him and associating with him, he's purifying your heart and your consciousness, giving you faith. तो कृष्ण के साथ आप संपर्क में आ रहे हैं, उनके निर्देश के माध्यम से, जो किताबों में लिखी हुई बातें उनके माध्यम से, कृष्ण के संपर्क में आने से आप शुद्ध हो रहे हैं और उसके वजह से आपको और श्रद्धा विकसित हो रही है। Giving us intelligence to understand what's happening here. और आपको बुद्धि मिल रही है, आपको समझ मिल रही है कि यहाँ क्या हो रहा है, इसके यहाँ पर Doesn't क्या mean we बताया जा रहा है। understood everything. ये ऐसा मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ समझ गए, Something we definitely understood by Krishna's mercy, Prabhupada's mercy. लेकिन प्रभुपाद और कृष्ण की कृपा से हमें कुछ चीजें समझ में आ गई। I remember reading the Bhagavad Gita and say, is there anybody on this planet who's actually practicing that Bhagavad Gita? मुझे याद है जब मैंने भगवत गीता पढ़ी, मेरे मन में ये सवाल आया कि कोई ऐसा एक आदमी होगा जो असल में इन सारे भगवत गीता के निर्देश का कोई पालन कर रहा हो। Because whoever's actually, if there's anyone on this planet who's understanding this and following this, that's really bhakta, that's really devotee of God. क्योंकि मैं समझ पाया अगर कोई इस किताब में लिखी हुई सारी बातों को कोई अगर पालन कर रहा है जो इस धरती में मौजूद है, वो असल में जरूर भगवान का भक्त है, वही असल में भगवान का शुद्ध भक्त है। And we all saw previously in our life, we had some different spiritual people. They gave us some hints, some encouragement, some kind of instruction. You saw, oh, God has worked through that person, gave you some impetus, right? और इससे पूर्व भी हमारे जीवन में कई बार हमें ऐसे कुछ आध्यात्मिक रुचि वाले व्यक्ति मिले जिन्होंने हमें प्रेरणा दी, हमें कुछ ऐसा निर्देश दिया, हमें कुछ ऐसा सलाह दी जिसका पालन करके अंततः हमें कुछ न कुछ फ़ायदा मिला और हम ये समझ पाए कि भगवान अलग-अलग व्यक्तियों के माध्यम से काम करते हैं। Everyone can trace back and say, oh, along the way, different personalities, God was using them to bring you closer to understand, right? हम सभी अपने जीवन में पीछे जाकर देख सकते हैं कि कैसे भगवान ने अलग-अलग व्यक्तियों का इस्तेमाल किया मुझे सही चीज़ बताने के लिए और मुझे सही समझ देने के लिए। Undeniable, you know, God definitely used that person to help me, right? कोई इसका अस्वीकार नहीं कर सकता, सभी को पता है किसी न किसी तरह से भगवान ने But किसी maybe व्यक्ति they के only- माध्यम से हमारी मदद की। Maybe they only brought you so far, लेकिन वो आपको एक किसी स्तर तक लेके आ पाए right? And maybe at the end you're like little disappointed. और हो सकता है अंत में आप थोड़े निराश हुए। Then you realize, oh no, this person was only meant to bring me so far. और तब आप ये समझ पाए कि ये व्यक्ति मुझे यहीं तक लेके जा सकता है।
So then still we're hankering, we want to understand, we're trying to understand about the spiritual life, and all of a sudden Krishna, the Supreme Lord, He put another person into your life. तो इस तरह से हमारी जो इच्छा है वो उत्कंठा वो जारी रही कि मैं कृष्णा को जानना चाहता हूँ, भगवान कौन है इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने किसी तरह हमारे जीवन में और किसी आध्यात्मिक उन्नत व्यक्ति को हमारे जीवन में भेज दिया हमारी आगे मदद करने के लिए। And they're giving some additional information, some additional hint, right? और फिर वो और कुछ जोड़कर और कुछ ज़्यादा हमें सलाह दे पाए और बेहतर सलाह हमें दे पाए। Something we didn't hear or understand before. जो हम पहले नहीं समझ पाए थे और जो हम पहले श्रवण हमने नहीं किया। So now, okay, now I have to follow that. Now you don't know where it's bringing you, but I have to follow that. If you're interested, God, Krishna will give you intelligence. You have to just take it. तो कृष्ण ने किसी तरह हमें ये बुद्धि दी, भगवान ने हमें इस तरह ये बुद्धि दी कि हमें कुछ अभी बेहतर चीज़ पता चल रही है। हो सकता है ये हमें कहाँ तक लेके जाएगा हमें पता नहीं, लेकिन अभी मुझे ये समझ आ रहा है कृष्ण मुझे ये बुद्धि दे रहे हैं और मुझे इसका पालन करना है। So in this way we see that yes, God, Krishna, He's working through other living entities to bring us, further closer to Him. इस तरह से हम देख सकते हैं कैसे कृष्ण अन्य जीवात्माओं का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम उनके और ज़्यादा नज़दीक जा सकें। So when I read Bhagavad Gita, I said, somehow I could understand by Krishna's mercy, Prabhupada's mercy, that this is a pure unalloyed bhakti. This is purely complete, loving devotional surrender to God. जब मैंने भगवद गीता पढ़ी तो किसी तरह कृष्ण की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से मैं समझ पाया कि ये सबसे शुद्ध भक्ति और सबसे श्रेष्ठतम भगवान को शरणागत करने का, उनकी सेवा करने का, प्रेम में भक्ति का सबसे श्रेष्ठ तरीका यहाँ बताया जा रहा है। The goal is completely pure and the process is completely pure. जो लक्ष्य है यहाँ पूरा शुद्ध बताया है और प्रक्रिया भी पूर्ण रूप से शुद्ध है। So only a very purified personality will be attracted and accepted and follow that. तो कोई बहुत ही ज़्यादा शुद्ध व्यक्ति ही इसको पूरी तरह से स्वीकार करके इसका पालन कर पाएगा। Because everyone else we saw was helping us before, maybe they were not so perfect, so pure. लेकिन क्योंकि हम देख पाएंगे कि उससे पहले जिन भी लोगों ने हमारी मदद की, हो सकता है वो उतने ज़्यादा पूर्ण नहीं थे, कंप्लीट नहीं थे उनके अंदर। Still they helped us. उन्होंने हमारी मदद की। Right? But what if you got really pure devotee? लेकिन कैसा होगा अगर आपको असल में कोई शुद्ध भक्त मिल जाए? How much more help would we get? कितना ज़्यादा मदद आपको मिल पाएगा? So when I read Prabhupada's Bhagavad Gita as it is, I thought, Krishna, is there anyone on this planet who's actually following that? तो जब मैंने प्रभुपाद की किताब पढ़ी भगवद गीता यथारूप, तो मैंने कृष्णा से पूछा कि कोई ऐसा व्यक्ति है पूरी धरती में जो पूरे असल में इसका सभी चीज़ों का पालन कर रहा हो? Because can you imagine if you have those personality association? क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति का संग मिल पाए? How much complete and quicker your spiritual advancement would be? आप कितनी तेजी से और कितनी जल्दी से आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे? And complete? और पूर्ण रूप से। And then we came to understand about Srila Prabhupada. और तब हमें श्रील प्रभुपाद जी के बारे में पता चला। And then we learned about his disciplic succession, Krishna's disciplic succession from Mahaprabhu. और तब हमें उनके शिष्य परंपरा, कृष्ण की परंपरा और महाप्रभु के परंपरा के बारे में पता चला। So these are all premi bhaktas, pure bhaktas, shuddha bhaktas. ये सब प्रेमी भक्त, शुद्ध भक्त हैं। Following premi bhakta, shuddha bhakta path. और ये शुद्ध भक्त प्रेमी भक्त के पद पर चल रहे हैं। So maybe we got purified and attracted to that idea and developed some desire for understanding that and how to come to this. तो किसी तरह से हम आकर्षित हो पाए, शुद्ध हो पाए इस विचार से, इस पद पर आगे जाने के लिए, और हमारी इच्छा जो है और ज़्यादा मजबूत हुई इस पर चलने के लिए। We have some new devotee, Prabhu. हमारे पास कुछ नए भक्त हैं, उनका बहुत स्वागत है। Yes? Is that Peter? Peter. He looks like a completely different person. पूरी तरह से अलग ही आदमी लग रहे हैं आज ये। The original Peter came back. तो ओरिजिनल पीटर वापस आ गया। This is unbelievable. विश्वसनीय This is है like ये। a miracle. ये तो चमत्कार हो गया। Krishna, I didn't recognize you there for a मैं तो minute. पहचान ही नहीं पाया इसको। Really? असल में। Wow, that's nice. अच्छा है ये। Am I saying right thing though? क्या मैं सही चीज़ कह रहा हूँ? Do we all more or less fit into this kind of process? क्या हम कम या ज़्यादा इसी प्रक्रिया में हम इसमें फिट नहीं होते? Then when I came to ISKCON, I said, I met one Prabhupada disciple. I said, who's the most purest, most advanced, most elevated? I need that kind of association.
तो जब मैं इस्कॉन में आया, मैं एक प्रभुपाद के शिष्य से मिला, मैंने उनसे पूछा कि इस संस्था में सबसे ज़्यादा शुद्ध, उन्नत और सबसे ज़्यादा योग्य भक्त कौन है? Maybe there's many people, maybe they can teach you something and show you something, that's fine. हो सकता है कुछ लोग आपको कुछ दिखा सकें, कुछ आपकी मदद कर सकें, वो ठीक है। But I understood all these people who helped me, if I got the best, then I could learn the most. तो मैंने ये देखा, ये सारे व्यक्तियों ने जिन्होंने मेरी मदद की, अगर मुझे उनके बजाय अगर किसी शुद्ध भक्त का मिल जाए तो मैं सबसे ज़्यादा सीख पाऊँगा। It's just like in university, sometimes they're teaching some subject matter, but there's like 3-4 teachers teaching same topic. तो जैसे किसी विश्वविद्यालय में क्या होता है, एक विषय आप वस्तु आप चुनते हैं सीखने के लिए, और 3-4 अध्यापक होते हैं जो उस विषय को सिखा रहे हैं, सेम एक ही चीज़ को। Different times, different days, right? Same topic. अलग दिन, अलग समय में वो एक ही विषय के ऊपर 3 अध्यापक बात करते हैं। So if you really like that topic and subject matter you really want to learn, then you do some research to find out really who's the best professor there, isn't it? तो अगर आपको विषय बहुत पसंद है और आप उसको असल में समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आप ये खोजबीन करना शुरू करेंगे कि इन तीनों अध्यापकों में सबसे श्रेष्ठ कौन है जो मुझे अच्छे से सिखा सकता है। If that's not your interest, then you say, okay, which time frame it works best for me, right? Then you take any professor, you know. और अगर आपको असल में उतनी कोई रुचि नहीं है तो आप देखेंगे आपके समय और परिस्थिति के आधार पे कौन ज़्यादा आपको उपलब्ध मिल सकता है, आप उसको चुनेंगे। I have, 11 to 1:30 is convenient for me. Okay, this one guy is teaching. Okay, I'll take him. You know, is it like this? You know. तो क्या ये ऐसा चलेगा, मेरे पास 11 से लेके 1:30 बजे तक का समय है, तो इस समय में जो टीचर पढ़ा रहा होगा, शिक्षक पढ़ा रहा होगा, उसको मैं चुन लूँगा। तो हम इस तरह से चुनाव करेंगे क्या? So just to meet the bare minimum we're doing, you know. तो किसी तरह से जो जितनी कम से कम ज़रूरत हम पूरा कर पाएँ, हम उसको कर रहे हैं। But if you really are greedy in that subject matter, लेकिन अगर असल में आपको लोभ है उस विषय में, and you really want to understand it, और आप असल में उसको समझना चाहते हैं, you'll definitely look for the most elevated, qualified person you can find, isn't it? आप सबसे ज़्यादा उन्नत, सबसे ज़्यादा योग्य, सबसे ज़्यादा उन्नत व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करेंगे। And that's true in material life, it's also true in spiritual life. और ये भौतिक जगत में भी होता है और ये आध्यात्मिक जगत में भी काम करता है। So I thought if all these people who are imperfect but maybe sincere helped me to some degree, what if I got a premi bhakta, a pure devotee, really elevated Vaishnava? What if I could find one of those? तो मैंने ये देखा जो ये कुछ व्यक्ति है पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, उन्होंने मेरी कुछ हद तक मदद की, लेकिन क्या होगा अगर मुझे कोई सबसे ज़्यादा उन्नत, सबसे ज़्यादा शुद्ध प्रेमी भक्त मुझे प्राप्त हो सके, तो मैं कितना ज़्यादा सीख सकता हूँ। I had this thought, I had this desire. मेरी ये इच्छा थी, मेरे ये विचार था। Even before I joined ISKCON, I'm thinking, if I go to ISKCON, who is this type of personality? यहाँ तक कि ISKCON में आने से पहले भी मैं ये सोच रहा था इस तरह के व्यक्ति कहाँ हैं, कहाँ उपलब्ध हैं इस तरह के व्यक्ति। That everybody was thinking like this? क्या हर व्यक्ति इसी तरह से सोच रहे थे? Maybe. हो सकता है। Maybe. हो सकता है। So Krishna fulfilling all of our desire? तो कृष्ण हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। And when Krishna wants to reveal himself, he wants to connect you in that eternal loving relationship, then he'll send you his true representative. और अगर कृष्ण के साथ आपका संपर्क, कृष्ण आपको अपने सामने प्रकट करना चाहते हैं, तो वो आपके सामने अपने सही प्रतिनिधि को सामने आपके रखते हैं। Now, every preacher and every teacher and every guru and every sect and every religion all over the world is saying the same thing. तो सारे जगत में सारे गुरु, सारे प्रचारक, सारे शिक्षक, सभी धर्म में, सभी पंथ में लोग एक ही बात कह रहे हैं, एक ही चीज़ कह रहे हैं। They know God, they are true representative, what they know, what they're representing, what they're teaching, that's directly coming from God. They're all saying same thing. वो कहते हैं वो जानते हैं भगवान कौन है और भगवान के पास कैसे पहुंच सकते हैं, तो इन सारे तरीक़ों से वो सभी एक ही बात कह रहे हैं। More or less. कम या ज़्यादा। They may not say, if they're a little humble. वो हो सकता है ना कहें अगर वो थोड़े विनम्र हों। But really, that's their intention. Otherwise, why are they standing out there? Why are they putting themselves forward? असल में उनका यही उद्देश्य है, वरना क्यों अपने आप को इस तरह सामने लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं? They're thinking, yes, I'm a guru, I'm a teacher, I'm a preacher. वो सोचते हैं हाँ मैं गुरु हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं प्रचारक हूँ।
I can connect you to God. मैं आपको कृष्णा के साथ, भगवान के साथ जोड़ सकता हूँ। I have some connection. I can connect you. मेरा कुछ भगवान के साथ संपर्क है, मैं आपको भी जोड़ सकता हूँ। And if they're not thinking and saying like that, then what are they doing? What are they trying to do? और अगर आप वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं और ऐसा करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो असल में वो क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? और What is their other motivation then? उनका दूसरा और क्या उद्देश्य है? That's another subject matter. ये एक दूसरा विषय वस्तु है। Are you all right? You have patience? आप ठीक हैं? आपके पास धैर्य है? I'm just introducing some discussion for you, मैं कुछ परिचय कर रहा हूँ, हम क्या चर्चा करने वाले हैं, so that we can think about these things. ताकि हम इन चीज़ों के बारे में विचार कर सकें। So Krishna is saying, if you really want to understand me, तो कृष्ण कहते हैं, अगर आप असल में मुझे समझना चाहते हैं and really want to reconnect in your eternal loving relationship with me, और असल में आप मुझसे नित्य रूप से भक्ति में मुझसे जुड़ना चाहते हैं, then the first installment of Krishna's mercy for such sincere soul is he'll send him bona fide spiritual master. तो कृष्ण की पहली कृपा उस व्यक्ति को मिलती है जो इस तरह से गंभीर और ईमानदार है। कृष्ण उनके सामने प्रामाणिक गुरु को भेजते हैं। Because my Gurudev used to say, Krishna knows who is his own man. मेरे गुरुदेव कहा करते थे, कृष्ण को पता है कि उनका निज जन कौन है। We don't know who is Krishna's own man. हमें नहीं पता है कृष्ण के निज जन कौन है। This is problem. ये समस्या है। Because we're not so experienced क्योंकि हम उतने अनुभवी नहीं हैं, and not so pure, उतने शुद्ध नहीं हैं, not so smart, उतने बुद्धिमान नहीं हैं, not so serious, उतने गंभीर नहीं हैं, imperfect senses, अपूर्ण नहीं contaminated हैं, mind and senses, दूषित मन इंद्रिय है, false ego, pride. मिथ्या अहंकार, दंभ, We easily misunderstand. आसानी से हम भटक जाते हैं। So it's not so easy thing तो इतना आसान चीज़ नहीं है to understand. Because Krishna is on transcendental platform इसको समझना, क्योंकि कृष्णा दिव्य स्तर पे है and holy name is on transcendental platform. और भगवान का दिव्य नाम दिव्य स्तर पे And Krishna's representative, bona fide Guru, Vaishnava, they're also on transcendental platform. और कृष्ण के प्रतिनिधि वैष्णव वो भी दिव्य स्तर पे हैं, And the Dham is on transcendental platform. धाम भी दिव्य स्तर पे है। So everything to do with Krishna is on transcendental platform, including Krishna's devotee. तो कृष्ण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो दिव्य स्तर पे है, यहाँ तक कि उनके भक्त भी। Prabhupada yesterday was calling a Brahmabhuta existence. प्रभुपाद कल बता रहे थे ब्रह्मभूत अस्तित्व के बारे That में। means Shuddha Sattva platform. इसका मतलब शुद्ध सत्व अस्तित्व। Brahmana is Sattva. ब्राह्मण मतलब सत्व। But even Brahman platform is bodily platform. यहाँ तक कि ब्राह्मण स्तर भी शरीर का स्तर है। Shuddha Sattva means transcendental soul platform. और शुद्ध सत्व का मतलब दिव्य आत्मा का स्तर, That means a Vaishnava platform. यानी कि वैष्णव का स्तर। So we're saying, oh yes, we're Vaishnavas. हम कहते हैं हाँ हम वैष्णव हैं, But I mean really Vaishnava, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ असल वैष्णव, not aspiring Vaishnava. नहीं कि वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। Of course, if we're aspiring and desiring, by mercy, we can also, by their mercy, get there. अगर हम अवश्य इच्छा कर रहे हैं और हमारी ये इच्छा है वैष्णव बनने की, तो हम उनकी कृपा से हम भी बन सकते हैं। But the point is, what we're trying to figure out with Krishna, Krishna's devotee, and the subject matter is on Shuddha Sattva, transcendental spiritual platform. लेकिन बात यहाँ पर ये है कि कृष्ण और वैष्णव और उनके शुद्ध भक्त दिव्य स्तर पर हैं। So how will we understand it? तो हम इसको कैसे समझ पाएंगे? So if some brand new person, he's a devotee in ISKCON 6 months, 1 year, then they say, hey, now you have to pick spiritual master. तो कोई नया व्यक्ति जो ISKCON में आता है 6 महीने 1 साल हो जाते हैं, उनको कहा जाता है कि अब आपको एक आध्यात्मिक गुरु चुनना होगा। Right? We're just trying to figure out what is what, isn't it? हम बस अभी पता लगाने का ही प्रयास करेंगे क्या क्या है यहाँ। Especially Westerners, they're joining, shaving head and joining another culture. विशेष करके पाश्चात्य देश के लोग जो अलग सभ्यता से जुड़ रहे हैं, अपना सर मुंडा दे रहे हैं, Hearing some other language, और दूसरे किसी भाषा को सुन रहे हैं, right? Joining some institution. और किसी संस्था से जुड़ रहे हैं। This is a lot to digest in a very short period of time, isn't it? तो इतने कम समय में इतना सब कुछ पचाना बहुत मुश्किल है उनके लिए। Right? Within 6 months, you joined another religion. 6 महीने में आप किसी दूसरे धर्म में जुड़ गए,
another culture, दूसरी सभ्यता को, you're hearing another language, दूसरा भाषा सुन रहे हैं, and they're shaving your hair off, अपना सर मुड़ा लिया and you're putting on a dhoti और आपने धोती पहन लिया instead of like a suit or something, किसी तरह का सूट पहनने के and बजाय then you're eating with your hands. और अपने हाथ से खाना खा रहे हैं। Every time you try to eat with your hand when we're growing up, the mother's slapping you. What are you doing eating with your hand? जब हम जब बड़े हो रहे थे, जब भी हम अपने हाथ से खाने का प्रयास करते थे, हमारी माँ हमें हाथ पे थप्पड़ मारती थी, कहती थी ये क्या कर रहे हो? Now they're saying that it's suchi means you have to eat with your right hand. और ये बताया जा रहा है, हमें ये सिखाया जा रहा है कि सूची का मतलब हमें दाएं हाथ से खाना चाहिए। Every time I was eating with my hand, I'm waiting for my mother to come and slap me, you know. In the beginning, really. जब भी मैं अपने हाथ से खाने का प्रयास करता था, मैं हमेशा इधर-उधर देखता था कहीं मेरी माँ के मेरे हाथ पे थप्पड़ मारेगी। Because I'm thinking it's not like you're not supposed to do it, you know. क्योंकि मैं ऐसा सोचता हो सकता है ऐसा नहीं करना चाहिए। And I'm like, it's all right. They say, yeah, it's all right, you know. अच्छा यहाँ आने के बाद मुझे पता चला ये करना सही है, मैं कहा हाँ ये करना सही है। Right? And then after all of that, then they said, now you need a guru. और इतने सब कुछ करने के बाद कहते हैं कि आपको गुरु चाहिए। Right? We just found out like 2 weeks earlier what is guru, right? 2 हफ्ते हमें पहले पता चला कि गुरु क्या होता है। So this is like a shocking, isn't it? तो ये थोड़ा चौंकाने वाली खबर। And then you have no real information, just pick somebody. और आपके पास असल में कोई जानकारी नहीं है, और कहते हैं आप किसी को चुन लो। And we're completely contaminated, completely bewildered, completely brand new. और हम पूरी तरह से दूषित हैं, पूरी तरह से भ्रमित हैं, और हम पूरी तरह से नए हैं वहाँ। We practically don't know anything. व्यवहारिक रूप से हम कुछ भी नहीं जानते। What to speak if you're from Russia or China, some communist country, right? They didn't even believe in God. और इस बात का क्या कहना, जो रशिया और चाइना जैसे देश के लोग हैं, तो भगवान पे विश्वास भी नहीं करते हैं। And then they just saw what does it mean to live in a totalitarian institution. Now you have to join another institution, you know, yay, you know. और इनके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होता है किसी तरह से एक ऐसे सभ्यता से जुड़ना जहाँ पे एक व्यक्ति को केंद्र में मानकर उनकी पूजा की जाती है, ऐसा कुछ किया जाता है, वहाँ पर उससे जुड़ना जहाँ भगवान में लोग कोई विश्वास नहीं करते, ऐसे माहौल से वापस आकर। So my Guru said, Krishna knows who is his own man. मेरे गुरुदेव कहा करते थे, कृष्ण जानते हैं उनके निज जन कौन हैं। You don't know who is Krishna's own man. आपको नहीं पता है कृष्ण के निज जन कौन है। Everybody telling, yes, I'm Krishna's own man. सभी कोई कह रहे हैं, मैं कृष्ण का निज जन हूँ। I love Krishna very much. मैं कृष्ण से बहुत प्रेम करता हूँ। Right? लेकिन Krishna knows. लेकिन We कृष्ण don't जानते know. हैं, हम नहीं जानते। Maybe he is, maybe he is not. हो सकते हैं वो हैं, हो सकते हैं नहीं। But I don't know. मुझे नहीं पता। I cannot say 100% sure. मैं 100% नहीं कह सकता। So my Guru said, if you pray to Krishna, if it's up to me, I'm going to get cheated. Definitely. मेरे गुरुदेव कहा करते थे, अगर आप कृष्ण से प्रार्थना करें, अगर मैं स्वयं से चुनाव करूं तो मैं ठगा जाऊंगा। Because I have no qualification to understand it. क्योंकि मेरे पास कोई योग्यता नहीं है इसको समझने की। I don't have qualification to understand who's actually qualified. मेरे पास ये योग्यता ये समझ पाने की नहीं है कि असल में कौन योग्य है। So how I can make this decision? तो मैं ये फैसला कैसे ले पाऊंगा? So we are dependent on Krishna, Prabhupada says, to give you intelligence and faith. Who is Krishna's own man? प्रभुपाद बताते हैं हमें कृष्ण पर निर्भर होना है ताकि वो हमें बुद्धि दे, श्रद्धा दे, ये बताने के लिए कि कृष्ण के निज जन कौन है। Because Krishna says, we're quoting the verse from Bhagavad Gita, that Krishna says, if you really want to understand me in tattva, in truth, then you must surrender to my representative bona fide spiritual master and disciplic succession. कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बता रहे हैं, अगर आप मुझे समझना चाहते हैं, मुझको प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु जो प्रामाणिक परंपरा में है उनको जाके शरणागत करना होगा, तत्वदर्शी गुरु को। A humble state of mind, then render seva, service attitude there. और विनम्र मनोभाव से उनकी सेवा करना। And then when you have some question or doubt, then you ask, the Guru will help you to understand it properly. और अगर आपको कोई सवाल है, कोई संदेह है, तो आप गुरु से जिज्ञासा कर सकते हैं, वो आपको समझने में मदद करेंगे सही तरीके से। Now that's Krishna's arrangement of how he's purifying and qualifying us enough to understand him in tattva, in truth. तो ये कृष्ण की व्यवस्था है, कैसे हमें पर्याप्त मात्रा में शुद्धता दे और हमें योग्य बनाए कि हम तत्व को समझ सकें। So when Krishna says, I'll show special mercy to you and give you intelligence and faith, how is he doing it?
और कृष्ण कहते हैं मेरी विशेष कृपा देने के लिए मैं आपको शुद्ध करूंगा, मैं आपको योग्य बनाऊंगा कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। First, he's giving us intelligence and faith पहले in the वो heart. Krishna says, I am the source of all knowledge and intelligence within the heart of every living entity. तो पहले वो हमें बुद्धि श्रद्धा देते हैं। कृष्ण बताते हैं वो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है और सभी ज्ञान बुद्धि के स्रोत हैं। Guru Shastra Atma Rupe. Atma Rupe means the super soul Paramatma Chaitya Guru. गुरु शास्त्र आत्मरूपी, आत्मरूपी का मतलब परमात्मा चैत्य गुरु हमारे हृदय में। So Krishna says to show special mercy to somebody who wants to understand me, I'll purify your heart and your consciousness. तो कृष्ण बताते हैं किसी को विशेष कृपा देने के लिए जो मुझे समझना चाहते हैं मैं उनका हृदय और चेतना को शुद्ध कर दूंगा। Then I'll give you intelligence and faith how to come to me. और मैं उनको बुद्धि दूंगा, श्रद्धा दूंगा, कैसे मुझ तक आ सकते हैं। Who wants that? किसको ये चाहिए? Krishna said, if you don't want that, you want to forget me, then I'll give you false ego, pride, and you'll just forget me. कृष्ण कहते हैं अगर आप मुझे भूलना चाहते हैं तो मैं आपको एक बड़ा मिथ्या अहंकार दूंगा जिसके बाद आप मुझे सुन नहीं पाएंगे, आप मुझे भूल जाएंगे। Then you come. Sometimes Krishna sent the guru to you, कभी-कभी कृष्ण गुरु आपके पास भेजेंगे and sometimes you go to the guru. और कभी आप गुरु के पास जाएंगे। But the arrangement is Krishna's arrangement. लेकिन ये व्यवस्था कृष्ण के द्वारा की जाएगी। But Krishna in the heart, Paramatma Super Soul, will give intelligence and faith, and Prabhupada says Krishna will dictate to you, this is my arrangement, and you should accept this personality as your guru. और कृष्ण बताते हैं जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, मैं आपको बुद्धि दूंगा, श्रद्धा दूंगा, मैं आपको दिशा दूंगा कि आपको इस व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। That's Guru Tattva. ये है गुरु तत्व। That's Paramatma Tattva. ये है परमात्मा तत्व। So if you don't train people to understand these tattvas, how will they know Krishna's arrangement and who Krishna is sending to you, his own man, to help you in the form of your spiritual master? How will you understand that? तो अगर हम शुरुआत में ही ये प्रशिक्षण नहीं देंगे इन तत्वों के बारे में तो कोई कैसे समझ सकता है कि कृष्ण की क्या व्यवस्था है, कैसे कृष्ण ने उनके लिए किसी एक व्यक्ति को चुना है जो आपकी आगे उनकी मदद कर सकता है चीज़ों को समझने के लिए और अंत में उनको शुद्ध करके उनको उनके तक पहुंचा सकता है। So if we don't want to learn to search out Krishna within, अगर हम कृष्ण को अपने भीतर नहीं ढूंढ रहे हैं, and we're not looking for external manifestation of Krishna in the form of the spiritual master, और हम कृष्ण के बाहरी रूप को नहीं ढूंढ रहे हैं जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, then where will our purifying intelligence and faith come from? तो हमारा ये शुद्ध बुद्धि और श्रद्धा कहाँ से आएगा? Prabhupada said 2 mercies required. तो बात कहते हैं 2 कृपा की जरूरत है, Mercy of Krishna कृष्ण की कृपा, and the mercy of the Guru. गुरु की कृपा। By the mercy of Krishna, one gets a bona fide Guru. कृष्ण की कृपा से किसी को प्रमाणिक गुरु मिलते हैं। And someone said to Prabhupada, well, it sounds very difficult to understand who is your Guru. और किसी ने एक बार प्रभुपाद से सवाल पूछा, सुनने में बहुत मुश्किल लगता है ये पता लगाना कि गुरु कौन है। And Prabhupada said, that's not difficulty. प्रभुपाद कहते हैं ये मुश्किल नहीं है। The difficulty is how sincere and serious are we to want to surrender to Krishna. समस्या ये है कि हम कितने गंभीर और ईमानदार हैं कृष्ण को शरणागत करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। And Prabhupada said, hardly anybody really is interested for that. और प्रभुपाद कहते हैं मुश्किल से ही कोई इसमें किसी को इसमें रुचि है। Prabhupada in purport in Bhagavatam, he said, hardly anybody really wants to get out and go home back to Godhead. श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य बताते हैं कि मुश्किल से ही कोई इच्छा करता है भौतिक जगत से बाहर आने का और भगवत धाम वापस आने का। But if you ask hundreds, thousands of devotees in a spiritual movement, everybody will tell you they want to go back home, back to Godhead. लेकिन आप संस्था में हजारों और सैकड़ों जिस भी भक्त से पूछेंगे सभी कोई कहेगा कि वो भगवत धाम जाना चाहता है। Of course I want to be devotee. हाँ, मैं अवश्य भक्त बनना चाहता हूँ। Of course I want to go back home, back to अवश्य Godhead. मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ। Well then why does Prabhupada said hardly anybody is interested to go back home, back to Godhead? तो प्रभुपाद ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुश्किल से ही किसी को रुचि है भगवत धाम जाने में? Because we don't want to go through the process. क्योंकि हम प्रक्रिया से गुजरना नहीं We चाहते। don't want to go through the how do you call it? The tapodivyam. क्योंकि हम ये तपोदिव्यम से गुजरना नहीं चाहते। We don't want to adjust our priorities. हम अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित नहीं करना चाहते। We don't want to surrender. हम शरणागति नहीं करना We चाहते। don't want to be instructed. हम निर्देश नहीं लेना चाहते। We don't want to be corrected. हम सुधार करना नहीं चाहते अपना।
We don't want to get rid of the false ego and this Maya's plan. हम अपने माया की योजना और मिथ्या अहंकार से मुक्त नहीं होना चाहते। So everybody can say, of course we want to go back to Godhead. तो सभी कोई कह सकता है अवश्य मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ। But by not sincerely, eagerly accepting this information and trying to implement it into our life, then really we're not that serious. तो असल में इन सारी निर्देशों को समझना और उनको अपने जीवन में लागू करना, मतलब इसका मतलब ये साफ है कि हम गंभीर नहीं हैं। And this is very unpalatable. तो ये सुनने में बहुत कड़वा लगता है। Because everybody thinks they're very sincere. क्योंकि सभी कोई ऐसा सोचना चाहते हैं कि वो बहुत ईमानदार हैं। Everybody, oh yes, I'm devotee of God, I'm pious, I'm going to the temple church from the childhood. Everybody thinks they're sincere. सभी को ये सोचना चाहते हैं, सभी को ये सोचते हैं कि वो ईमानदार हैं, वो बचपन से ही मंदिर जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, पूजा करते हैं। And then we surround ourselves with family and friends. They say, oh, he's so pious, he's so religious man, and he has nice qualities. And we're like, no, 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 no. और कई बार परिवार के लोग, सगे संबंधी, मित्र लोग आसपास जमा होते हैं और लोग अब हमें कहते हैं कि ओ आप बहुत पुण्य कर्म करते हैं, आप बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। हम कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं है। This is funny in India, right? Like if they say no like 4 times, that means yes, right? If they say no, 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 that means actually yes, right? भारत में ये बहुत मजाकिया बात है कि कई बार जब लोग 4 बार अगर ना कह दे, इसका मतलब असल में वो हाँ कहना चाहते No, हैं। no, ना 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 no, no. इसका मतलब वो हाँ कहना चाहते हैं। Oh, yes, yes, yes. You might as well say yes. तो हाँ क्यों नहीं कह रहे? So because of false ego and because of blindness, तो मिथ्या अहंकार और अंधेपन की वजह से we really believe that we are qualified हम विश्वास करते हैं कि हम बहुत योग्यता है, and fully surrendered, full faith in Krishna. पूर्ण रूप से शरणागत, पूरा श्रद्धा है हमें कृष्ण में। One devotee, we used to joke all the time. He said, you know, I feel like I haven't had a day off in like 13 years. हम अक्सर एक मजाकिया करते थे, हम एक भक्त अक्सर हमसे कहा करता था मैंने 13 साल के अंदर एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। So he was complaining that like it was so much effort. तो वो शिकायत कर रहा था असल में कि इतना ज़्यादा वो मेहनत कर रहा है। And like even one day we didn't have off, you know. यहाँ तक कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। He's believing that. और वो विश्वास भी कर रहा है उस बात पे। So the false ego and the pride, this is what we think. We're very great, we're very knowledgeable, we're very devoted, we're very special. तो ये मिथ्या अहंकार में ये होता है, हम सोचते हैं हमारे पास बहुत ज्ञान है, हम बहुत ईमानदार हैं और हमें बहुत भक्ति है। People are just envious and jealous. They don't appreciate us so much. लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, वो हमें समझते नहीं हैं, हमारी सराहना नहीं करते हैं। Then we surround ourselves with people like yes men. We surround ourselves with yes men. तो और हम अपने आसपास में उन लोगों को रखते हैं जो हमसे हमेशा हाँ हाँ कहे। I remember one of my godbrothers used to just say, sir, 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 sir. And I'm like, and I said, what is he saying? You know? मुझे याद है मेरा एक गुरु भाई अक्सर ऐसे सर 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 कहा करता था, तो मैं सोचता था कि ये क्या कह रहा है ये सर। I don't understand. What is he doing? Just sir, 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 sir. I thought he had like some mental problem. वो हमेशा बस सभी को ऐसे सर सर कह रहा था, मुझे लगा इसका कोई दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। I never heard somebody say sir like, 30 times in a row. मैंने कभी किसी आदमी को ऐसा नहीं सुना जो 30 बार एक ही लाइन में 30 बार वो सर कहता है। That was very strange to me. मुझे सुनने में बहुत विचित्र। Would that be strange to you? आपको विचित्र लग रहा है सुनने Sir, में? sir, sir, sir. Just like yes man, he's just running behind you. Sir, sir, Maharaj, 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 Maharaj. जैसे Just like yes man, ये सब कहते हैं जब हाँ हमेशा हाँ कहने वाले व्यक्ति बस पीछे पीछे घूमते रहेंगे, हाँ महाराज हाँ 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 कहते रहेंगे बस। हाँ, yeah. Sir, sir, Maharaj, Maharaj. So then, we have in English they say, we're believing our own hype. तो अंग्रेजी में कहावत है, हम हमारे ही जो खुद के गुणगान में हम विश्वास रखते हैं। And then we're surrounding ourselves with friends and people who are believing our own hype, isn't it? और हम अपने आसपास उन लोगों को रखते हैं जो विश्वास करते हैं हमारे गुणगान में।
oh, he's so devoted, he's so advanced, he's so nice devotee, he has so nice qualities. No, no, no. वो हमें आके कहेंगे और बहुत उन्नत है, बहुत शुद्ध भक्त है, बहुत वरिष्ठ भक्त है, और हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, Don't say like that. ऐसा मत कहिए। What were you saying? क्या कह रहे थे आप? It was like music to my ear. इस कान में कोई संगीत सुन रहे हो ऐसा लगता है। And then somebody speaking like, oh, this is not proper behavior, or this is not nice, you know, just like, what's his problem, you know? और कोई अगर हमको आकर कहे ओ आपको बर्ताव सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है जिस तरह से आप कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ओ इसकी समस्या क्या है? Because we can't believe it. क्योंकि हम इसका विश्वास नहीं कर पाते। So we don't have a good vision, honest, pure, objective understanding and vision of our true self. क्योंकि हमें अपने खुद की सच्चाई के बारे में ईमानदारी से हम अपने बारे में शुद्ध तरीके से नहीं जानते। And a lot of these anarthas, right, are like weeds, deep-rooted weeds, which are very subtle, which you cannot even recognize those things. और इनमें से बहुत सारे ये जो अनर्थ हैं, ये शाखाएं हैं, ये बहुत सूक्ष्म हैं और इनमें से बहुत सारी चीज़ों को हम पहचान नहीं कर सकते। So unless you get Krishna's mercy and a bona fide spiritual master, you'll never be able to understand and see all of that. तो अगर आपको कृष्ण की कृपा और प्रमाणिक गुरु की कृपा नहीं मिले, तो आप इस चीज़ को ना तो समझ सकते हैं और कभी देख भी नहीं पाएंगे। We'll just be, you know, legends in our own mind. हम खुद के ही मन में महान बनेंगे। John Legend. जॉन लेजेंड। One famous musician, he's named himself John Legend. I'm a legend in my own mind. एक बहुत प्रसिद्ध संगीतकार हैं जिनका नाम जॉन, उन्होंने अपना नाम ही रख लिया जॉन लेजेंड, खुद के मन में ही महान बन रहे थे। So everybody's doing like that. हर कोई ऐसा ही कर रहा है। Well, like, I'm not so bold that I would call myself legend, but, you know. मैं इतनी हिम्मत से सबके सामने नहीं कह रहा हूँ मैं महान हूँ, लेकिन असल में विश्वास यही करता हूँ। Come on, get real. So I have to tell you? कि मैं मुझे आपको बताना पड़ेगा क्या? No, I gotta tell you again. Am I speaking right there? क्या मैं सही बात कह रहा हूँ? So, where do we go now with this conversation? हम यहाँ कैसे पहुँच गए इस बातचीत में? Any questions up to this point? किसी का कोई सवाल है इस Yeah. बात में? I remember my Gurudev said, although the Guru is giving this Prayojana Tattva, Prem Tattva, Yashuda Tattva, topmost thing, you know, not anybody really interested for that thing. मेरे गुरुदेव कहा करते थे यद्यपि गुरु सबसे ऊंची चीज़ दे रहे हैं, प्रयोजन तत्व, प्रेम तत्व वो दे रहे हैं, लेकिन मुश्किल से किसी को इसको देने में रुचि। And then apparently they're listening. और देखने में वो लग रहे हैं श्रवण कर रहे हैं। But really they're not listening. लेकिन असल में श्रवण नहीं कर रहे हैं। It's not really entering inside of them. असल में उनके कान में घुस नहीं रहा है। Because their mind is stolen by illusion. क्योंकि उनके मन को मोह ने चुरा लिया है। Whoever they like and love, that's where their mind is going. जिस चीज़ पे वो प्रेम करते हैं, जो भी चीज़ उनको पसंद My है, उनका wife, मन my वहीं लगा हुआ है। husband, my mother, my son, my daughter, मेरी पत्नी, मेरे दोस्त, मेरे बेटे, मेरे बेटी, my bank balance. मेरा बैंक बैलेंस। Whatever you love, that's where your brain will go. That's where your mind will go, right? जो भी चीज़ आपको पसंद है, जिस चीज़ से भी आप प्रेम करते हैं, मन अपने आप ही वहाँ चला जाएगा। And then to get the purified and be put under discipline and somebody there to correct you and confront you and challenge you, nobody likes this. और कोई आपको शुद्ध करना चाहता है, आपको सुधार करना चाहता है, आपकी गलतियाँ आपको बताना चाहता है, तो किसी को भी ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती। I was preaching one time to my godbrother, and after we were in the same room. Can you imagine? He's in the same room with me. और मेरे एक भाई थे, गुरु भाई, मैं उनको प्रचार कर रहा था, मैं उनसे बात कर रहा था, एक ही कमरे में हम थे। Day after day, and I'm just preaching like this to him, you know. और प्रतिदिन मैं उसको इस तरह से प्रचार करता था, हर दिन। He was like begging me, like, please, you know, I like you. मुझसे भीख मांगने लगा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। What you're telling is probably true. जो तुम कह रहे हो सकता है सत्य होगा। But sometimes, you know, a man just like can't handle this information. लेकिन कभी-कभी हम इतना जानकारी झेल नहीं सकते हैं।
So can we just be friends, तो क्या हम थोड़े दोस्तों जैसे रह सकते हैं? He was basically saying, please, I can't take it anymore, वो असल में ये कह रहा था कि मैं आपको और झेल नहीं सकता। It's like too much. मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो It's गया। too serious. बहुत ज़्यादा ही गंभीर हो। One person was complaining, they said, oh, this Maharaj, it's very painful to listen to him. एक व्यक्ति शिकायत कर रहा था कि ये महाराज को इसको सुनने में बहुत तकलीफ होती है। Because it's so tedious information. क्योंकि बहुत भीतरी गहराई से जो जानकारी में बात You're करते just हैं। speaking some tedious, heavy thing. It's like my brain just can't handle it, इतनी छोटी गहराई से बात करते हैं, मेरा दिमाग जो है वो फटने लगता है। So most people not interested. तो ज़्यादातर लोगों को कोई रुचि नहीं है। But if you ask anyone, any devotee, they say, of course I want to go back to Godhead. लेकिन आप किसी भी भक्त से जाके पूछेंगे तो कहेगा अवश्य मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ। Otherwise, what am I doing here? वरना मैं कर क्या रहा हूँ? So they believe that. They believe it. तो वो इस बात का विश्वास करते हैं। So, question? तो सवाल। So the question is, we are told that we have to depend on Krishna for everything. So when we ask Krishna something, how will I know that Krishna is telling me if there is no guru in my life? You cannot know. नहीं जान सकते। तो सवाल है ये कि आप हमेशा कह रहे हैं कि हमें कृष्णा के ऊपर निर्भर होना है। तो अगर हमारे मन में कोई सवाल आता है, हम कुछ सवाल पूछते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जवाब मुँह हमें कृष्णा से आ रहा है? और अगर हमारे पास गुरु नहीं है तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, हम नहीं जान पाएंगे। You see, everyone says, well, God is in the heart, सभी को कहते and हैं He's the source of our inspiration and intelligence, right? भगवान हमारे हृदय में है और वो सभी बुद्धि और सारे ज्ञान के स्रोत हैं। So He's a guru, Chetu Guru. तो वो गुरु हैं, चैत्य गुरु। So I'm praying to Him. तो मैं उनको प्रार्थना कर रहा हूँ। But how will we hear Him? लेकिन हम उनको सुनेंगे कैसे? This is question. ये सवाल है। Now, if we get mercy of Krishna and mercy of the Guru, and we qualify ourselves, then we will be able to take direction instruction from Krishna directly. तो अगर हमें गुरु का कृपा प्राप्त होता है, कृष्ण का कृपा प्राप्त होता है, और अगर हम योग्य हो पाते हैं, तो हम कृष्ण को सीधे सीधे हमारे हृदय में सुन पाएंगे। But for conditioned souls, लेकिन बद्ध जीवात्मा के लिए they cannot hear Krishna वो कृष्ण को नहीं सुन सकते, because too much contamination, too much mental contamination is there. बहुत ज़्यादा कलमश, बहुत ज़्यादा मानसिक कलमश भरा हुआ है, Too much addiction to mental speculation. बहुत बुरी लत लगे हुए है इस मनोधर्म की। So Krishna says, because you have this false ego and this pride and all of this contamination, you cannot hear me. कृष्ण कहते हैं इस दम्भ और मिथ्या अहंकार की वजह से इतना ज़्यादा कलमश भरा हुआ है कि तुम मुझे सुन नहीं सकते। So for conditioned soul, Prabhupada says, the only intelligence the super soul will tell you directly तो प्रभुपाद बताते हैं अगर बद्ध जीवात्मा के लिए परमात्मा एक ही उनको बुद्धि दे सकते हैं, एक ही दिशा दे सकते हैं, is, I have sent this guru and made this arrangement for you to meet this personality, and you should accept him as your guru. कि मैंने तुम्हारे लिए ये व्यवस्था की है और ये व्यक्तित्व गुरु हैं और तुमको इस व्यक्ति को जाके शरणागत करना If चाहिए। it's really Krishna's arrangement, अगर ये असल में कृष्ण की व्यवस्था है and you're really depending on और Krishna, अगर आप असल में कृष्ण पे निर्भर हो रहे then हैं, Prabhupada said he'll give you that intelligence and faith that this is my arrangement, and Prabhupada says Krishna will dictate to you, you should accept that person as your guru. तो प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण आपको वो बुद्धि और श्रद्धा देंगे कि ये वो व्यक्ति है, और कृष्ण आपको परमात्मा आपको दिशा देंगे कि ये वो व्यक्ति है जिसको मैंने तुम्हारे लिए गुरु के रूप में चुना है। That's what you, as a conditioned soul, that's what we can expect. और बद्ध जीवात्मा के रूप में ये हम उम्मीद रख सकते हैं, That's what we can hear from Krishna. वहाँ हम कृष्ण को सुन सकते हैं If we want to surrender and serve Krishna. अगर हम कृष्ण को शरणागत और उनकी सेवा करना चाहते हैं। And look, I'm not your judge of your sincerity and your strength of your desire. That's not my lookout. तो मैं ये नहीं देख रहा, मैं आपकी गंभीरता, आपकी ईमानदारी का न्याय मैं नहीं करूँगा, ये कृष्ण का है। That's Krishna. Krishna is the witness and the judge. कृष्ण गवाह, कृष्ण न्याय करता है आपके। So Prabhupada gives a very nice example तो प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं that the owner of the house, he has some construction crew building the house for him. तो किसी घर के मालिक जब किसी घर का निर्माण करवा रहे हो, तो जो कंस्ट्रक्शन के जो हेड होते हैं,
So the owner of the house, he just talks to the foreman. He just talks to the person in charge of all the laborers. तो जो घर के मालिक हैं, जो निर्माण करवा रहे हैं घर का, तो वो जाके जो सारे श्रमिक के मुख्य श्रमिक हैं, उनसे जाकर बात करते हैं. Prabhupada says that those who are most important person there, the owner just talks to those person. तो जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं वहाँ पे, तो घर के मालिक जाके सीधे उनसे बात करते हैं. Not so, just the ordinary, workers. तो जो मामूली श्रमिक हैं, उनसे जाके बात नहीं करते हैं. So yes, Krishna is in the heart. तो हाँ, कृष्ण है हमारे हृदय में. Yes, he is the source of knowledge and intelligence. हाँ, वो ज्ञान और बुद्धि के स्रोत हैं. Yes, he is guiding and inspiring us how to understand him and approach him. हाँ, वो हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कैसे हम उनके तक पहुँच सकते हैं, कैसे That उनको समझ सकते intelligence हैं. and faith is that I will qualify you, purify you, qualify you, and instruct you through my representative bona fide guru. And this is the person who is my own man. और वो बुद्धि और वो श्रद्धा ये है कि मैं आपको शुद्ध बनाऊंगा, मैं आपको योग्य बनाऊंगा. ये वो व्यक्ति है जो प्रमाणिक व्यक्ति है, जो मैंने आपके लिए चुना है. Don't try to figure out if I am one of these people. ये पता लगाने का प्रयास मत करो कि Don't मैं get उनमें से एक don't आदमी get हूँ. sidetracked. भटको मत यहाँ रास्ते से. Understand the dynamic and the science. तो इस विज्ञान को समझने का प्रयास करो, ये कैसे काम करता If है. we are not if we don't really want Krishna and we don't really want to surrender to Krishna, then analyzing who's a guru and who isn't is useless. तो अगर हम असल में कृष्ण को नहीं चाहते हैं, कृष्ण को शरणागत उनकी सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो कौन गुरु है कौन नहीं गुरु नहीं है, ये पता लगाना पूरा बेकार है. It's a waste of time. It's a distraction. You understand? Don't blame me. I didn't make up all of this information. मुझ पे दोष मत डालिए, मैंने ये सारे निर्देश तैयार नहीं किए हैं स्वयं से. I'm just saying, Guru Sara Shastra. मैं सिर्फ गुरु This is what they're शास्त्र से telling. कह रहा हूँ, और वो यही बात This is कह what रहे हैं. Krishna says. This is what Acharyas say. This is what the Shastra says. All previous Acharyas have said. I applied it. I got same results. This is how I got my guru. So this I'm telling you. तो यही कृष्ण कह रहे हैं, यही आचार्य कह रहे हैं, यही शास्त्र कह रहा है. मैंने भी इसको स्वयं में लागू किया और मैंने भी इसका फल देखा, और वही मैं आपसे बांटने का प्रयास कर रहा हूँ. By mercy of Krishna, one gets a guru, bona fide guru. कृष्ण की कृपा से किसी को प्रमाणिक गुरु प्राप्त होते हैं. But the mercy of bona fide guru, then he will purify you and qualify you and teach you and explain everything to you, answer all your questions, destroy all of your doubts, so that you can get Krishna. और प्रमाणिक गुरु की कृपा से वो आपको सभी चीज़ों को समझाएंगे, सभी चीज़ों को सिखाएंगे, आपको शुद्ध करेंगे, आपको योग्य बनाएंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे, आपको संदेह को नष्ट करेंगे, और अंत में आपको कृष्ण प्रदान करेंगे. So Prabhupada said 2 mercies are required. प्रभुपाद कहते हैं कि 2 कृपा की जरूरत है. So where is this training? तो ये प्रशिक्षण कहाँ है? Bona fide guru will teach you all of this to you. प्रमाणिक गुरु ये सब कुछ आपको सिखाएंगे. Otherwise, how will you understand how to select and understand who is your guru? वरना आप कैसे समझ पाएंगे किसको अपने गुरु के रूप में चुनना है? You'll have no idea. हमारे को भी कुछ पता ही नहीं. Oh, you're in movement 6 months in ISKCON, pick a guru. ओ आप ISKCON में 6 महीने से हैं, एक गुरु चुनो. Who's the guru? I don't गुरु कौन know. है? मुझे नहीं पता. Well, all these people accepted that person as the guru. Okay. और ये सारे लोगों ने इनको गुरु के रूप में चुना हुआ. ठीक है. Shouldn't there be training to understand what is the process of Guru Tattva? क्या ऐसा प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए कि गुरु तत्व क्या है इसके बारे में समझने के लिए? Shouldn't they give you direction, intelligence, and faith in the actual process? क्या आपको दिशा, आपको बुद्धि, आपको श्रद्धा असल इस प्रक्रिया में नहीं दी जानी चाहिए? So that you can have faith in Krishna, to depend on Krishna, to make the arrangement and give you that necessary intelligence and faith? ताकि आपको कृष्ण में श्रद्धा हो, आप कृष्ण में आपकी निर्भरता आए, ताकि आपको उस व्यवस्था में आपको श्रद्धा मिल सके जो कृष्ण ने आपके लिए की है. So Sanjay said, my spiritual master, he purified my mind and my senses. तो संजय कहते हैं मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मेरे मन और इंद्रियों को शुद्ध कर दिया. So by hearing from him and associating with him and serving him, I pleased him. Then by his mercy, he purified my mind and my senses तो for me.
उनसे श्रवण करके, उनकी सेवा करके, उनका संग करके, उनकी कृपा से उन्होंने मेरे मन और इंद्रिय को शुद्ध कर दिया। Then he said, then I could directly hear Krishna. तब उन्होंने कहा तब मैं कृष्ण को सीधे सीधे श्रवण कर पाया। So some divine eyes, some divine ears, some transcendental eyes and ears are required. Where are you going to get those? तो दिव्य आंखें, दिव्य कान हमें प्राप्त हुई उनको, तो ये सब शिक्षण कहाँ दिया जा रहा है? You think it's like Halloween? You just go, buy some divine ears and some divine eyes and show up at the Halloween party? What is तो it? ये कोई पार्टी जैसा है कि आपने कुछ ऐसे दिव्य कान, दिव्य आंखें खरीद ली और आप पहुंच गए पार्टी में। I'm coming as Arjuna to the Halloween party. I have divine ears and divine eyes, मैं अर्जुन के जैसे आऊँगा, दिव्य आंखें, दिव्य कान लेके पहुंच जाऊँगा। Right, then we're stumbling over everything because we can't hear anything and can't see anything. और फिर हम एक दूसरी चीज़ से टकरा रहे हैं क्योंकि हमने ये नकली आंखें और कान लेकर आ गए कहीं से, तो हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं, कुछ पता नहीं लगा पा रहा। We can't even see materially, what to speak of transcendentally, भौतिक रूप से कुछ देख नहीं पा रहे हैं, आध्यात्मिक चीज़ें क्या देख पाएंगे? And then you're like falling over the table, and everyone's like, you're trying to put your divine eyes back on and your divine ears, and everyone's like, who did you dress up as? It's like, I'm Arjuna, I'm Sanjay, तो आप ऐसे टेबल के ऊपर से पलट कर गिर रहे हैं, फिर आप उठते हैं और अपने जो दिव्य आंखें और दिव्य कान जो खरीद के लाए आप उसको वापस से अपने कानों आंखों में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो लोग पूछते हैं आपको, आप किसके तरफ पोशाक पहन कर आए हो? मैं अर्जुन बन के आया हूँ। So that's not going to work. ये काम नहीं करेगा। So without Krishna, bona fide guru, where are you going to get your divine eyes and ears? तो बिना कृष्ण प्रमाणिक गुरु के हमें ये दिव्य कान, दिव्य आंखें कहाँ से मिलेंगी? You're going to go to the bazaar? You're going to go to the market? क्या बाजार में जाके खरीदेंगे? Amazon? 3-day delivery? 3 दिन में पहुँचा देगा। Did I answer the question? क्या मैंने सवाल का जवाब दिया? Did I understand it properly? क्या मैं सही तरीके से समझ What पाया? was the question again? सवाल क्या था फिर से? That how can we understand what Krishna wants if he didn't accept Guru? Impossible. असंभव है। कैसे हम पता लगा सकते हैं गुरु कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं अगर हमारे पास गुरु नहीं है? तो गुरुदेव बता रहे हैं असंभव है। Because that's not Krishna's system. क्योंकि ये कृष्ण की व्यवस्था नहीं है। If we don't follow the exacting science of Krishna's system, you don't get mercy of Guru and Krishna, how do we think we're going to hear and understand Krishna? तो अगर हम ये कृष्ण की व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं तो हम क्या विश्वास करते हैं? हम कैसे कृष्ण का श्रवण करेंगे? कैसे कृष्ण को समझेंगे? You're going to hold a gun to Krishna? You're going to just force him? तो क्या कृष्ण के ऊपर बंदूक तान के उनको जबरदस्ती उनके ऊपर करेंगे? How he'll tell you? कैसे बताएंगे वो आपको? He help you inside because he give you intelligence who to accept from the outside. क्योंकि वो आपको भीतर से मदद करेंगे, ये बुद्धि देंगे, श्रद्धा देंगे कि बाहर आपको किसको स्वीकार करना है। And then when the Guru speaks and purifies us and speaks the absolute truth, then Krishna inside, Chaitanya Guru Paramatma, will say, yes, this is correct. What he's telling you is correct. तो जब प्रमाणिक गुरु हमसे कहेंगे और हमें शुद्ध करेंगे और परम सत्य की बातें करेंगे तो परमात्मा जो हमारे हृदय में है वो कहेंगे हाँ ये सत्य है। It'll have the ring of truth. उसके अंदर सत्य की घंटी होगी। If it's really coming from Krishna, then Krishna will say, this is very good, you should accept it. अगर ये असल में कृष्ण से आएगा तो कृष्ण कहेंगे हाँ ये सही है, आपको इसको स्वीकार करना चाहिए। Otherwise, you'll get some Maharaj saying, like, वरना कोई आपको महाराज मिलेंगे वो कहेंगे वो and you're like waiting for something, it's like, ऐसा लगता है उसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कौन है कोई आएगा। I'm like almost something's gonna just fall out. I don't know. मुझे लगा ऐसा लगा कुछ गिरने वाला है कहीं से कुछ।
I can't keep track of all of that. You know what I mean? मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या बात हो रही I'm है। having trouble connecting the dots. You know. मुझे समस्या हो रही थी मैं क्या बातें कर कैसे जोड़ूं उनको। Maybe I'm not transcendental enough. I don't know. You हो know. सकता है मैं उतना दिव्य नहीं हूँ, मैं उस स्तर पे नहीं हूँ। Right? Shouldn't it be nicely explained step by step? क्या It's ये- not just like we just act like avadutas and just floating through the universe, just going. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें क्रमानुसार अच्छे तरीके से समझाया जाना चाहिए, वरना इस तरह हवा में उड़ते हुए कुछ ब्रह्मांड से तैरता हुआ कुछ बता रहे हैं ऐसा कुछ। Some explanation is required, isn't कुछ it? सही तरीके से विस्तार पूर्वक बताया जाना चाहिए। You know, if they're speculating, we can also go, ooh, ah. I don't need someone else to tell me that. अगर वो भी ऐसा मनोधर्म करेंगे तो ये हम खुद ही कर सकते हैं, हमें कोई और नहीं चाहिए इस तरह करने के लिए। What tattva is there, क्या तत्व है वहाँ? we just smile a lot? Does that mean I'm pure devotee? I'll just smile a lot and कि अगर मैं ज़्यादा हंसूंगा तो क्या मैं शुद्ध भक्त बन जाऊंगा? scream at you? क्या आपके ऊपर चिल्लाऊंगा? Give more money! Give more money! और पैसा दीजिए, और पैसा दीजिए। The guy's screaming. You might as well get a gun. Put the money in the bag, वो ऐसे चिल्ला के and the watch, and the watch. What else you want? ऐसे चिल्ला के That's not bhakti, ऐसे चिल्ला के रहे थे पैसा डालो, उससे बेहतर है कि बंदूक लेके आओ, तान के कहो, सब कुछ दो यहाँ पे, घड़ी दो, और क्या दे सकते हैं? और ये शुद्ध भक्ति नहीं है। I'm like scared hearing all of this thing, ये तो सुन के मैं थोड़ा डर जाता हूँ। I'm like looking for a bodyguard. I need some protection, man. मैं बॉडीगार्ड ढूंढने लगता हूँ, कोई मुझे बचाए। You start like hiding your wallet, अपना पर्स छुपाना शुरू कर देते हैं। What is this? क्या है ये? Is that bhakti? क्या ये भक्ति है? Am I wrong? Am I misunderstanding something? क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ? Oh. Give me a headache, सिर में दर्द होता है। Any other question? कोई और सवाल? One? कोई बिंदु? That's it? हो गया? Yeah. I'm still flying around in the airplane of mental speculation. अभी भी अपने मनोधर्म के विमान में मैं उड़ रही हूँ। I'm tired. मैं थक गई हूँ। Hare Krishna. She's looking for an airport to land, वो एक एयरपोर्ट की तलाश कर रही है, कहाँ उतर सके नीचे। She's running out of fuel. उसका ईंधन खत्म हो रहा She's है। exhausted. थक गई है। Right? The plane is, just like running on fumes, उसके You're विमान trying से to land it somewhere, उसके विमान से धुआं निकल रहा है, उसको कहीं लैंड करना है जल्दी। We're just trying to make a smooth runway, हम जो है एक अच्छा साफ रनवे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। Right? Sometimes they say, look, we're going to, by instruments, take over the plane. And we're going to land it from here. So just sit back, don't touch anything, कभी-कभी Remote कुछ control. कभी-कभी कुछ Sit back, relax, we'll land it ourselves. कभी-कभी ऐसा किया जाता है कि विमान को बाहरी तरफ से कुछ न कुछ सहायता दे के बाकी और औजारों से उसको जो है आसानी से लैंड कराया जाता है। तो कभी-कभी और कहा जाता है कि आप आराम से बैठिए, किन्हीं चीज़ों को छूइए मत। Get your hands off the wheel. अपने हाथ हटाइए उस We got the runway, we got the fire trucks are there, just sit back, we'll land the plane for you, just don't get in the way, तो ये अग्नि को रोकने वाले दल और सारे कुछ व्यवस्था कर दिया जा चुका है और रनवे तैयार किया जा चुका है। आप बस शांति से बैठिए, आराम से, आप बहुत अच्छे से उतार दिया जाएगा। So,
Did I answer your question? क्या आपके सवाल का जवाब मिला? I think I did. मुझे लगता है यही था आपका उत्तर। When I'm watching the videos, lectures of Prabhupada or God going Swami Maharaj, the first thing in my mind, wow, they are so simple. Like simplicity is the Vaishnavism. Then I'm seeing myself and I say, oh, my nature is so destructive, like completely devastating. Sometimes I feel They're pure devotee, they're simple devotee, real devotee. So we should think, I'm not, according to that standard. तो वो शुद्ध भक्त हैं, वो बहुत सरल हैं, तो उनकी बहुत योग्यता है। तब जब हम उनको देखते हैं तो ये हमें समझना चाहिए कि हम उनके जैसे नहीं हैं। But by their mercy, how do I get their mercy? So they can bless me and qualify me and purify me, so I can also become simple, nice devotee. तो मैं क्या करूं कि मुझे उनका आशीर्वाद मिले, उनका कृपा मिले, ताकि वो मुझे शुद्ध करें, मुझे योग्य बनाएं। Put your energy there. अपनी शक्ति वहाँ लगाइए। Don't just sit there like hitting yourself over the head. बस बैठ के अपना सर मत पीटते रहिए। You're not pure devotee, you're not worthy, you know. मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ। Okay, I got the point. समझ गया मैं बात। Now how do I get out of the mess and how do I become a nice devotee? तो इस अव्यवस्था से मैं कैसे बाहर आ सकती हूँ, कैसे शुद्ध भक्त बन सकती हूँ? Let me put my energy there. वहाँ अपनी शक्ति लगाइए। Right? We beat up ourselves enough by making all foolish decisions and getting all the reactions, isn't it? हमने पहले ही अपने आप को बहुत पीट लिया है, इतने मूर्खतापूर्वक गलत फैसले लेके और उनका दुख भोग के। So we got the point. Now we're looking for, a new path. तो हम अपनी बात समझ चुके हैं, अब हमें नया रास्ता चाहिए। So let me just simply try to accept it. मुझे सरलता से इसको स्वीकार करना चाहिए। And pray for intelligence and strength to go through that process. और उस बुद्धि और शक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि मैं इस प्रक्रिया से गुजर सकूं। In the right association. सही संग में। Otherwise you cannot expect any good result. वरना आप किसी बेहतर फल की उम्मीद नहीं कर सकते। One time I was in Bombay in Juhu temple. एक बार मैं बॉम्बे जुहू मंदिर में था। And I went to go on the elevator. और I pushed the button. मैं एलिवेटर लिफ्ट में था और मैंने बटन दबाया। And there was one Maharaj there. और वहाँ एक महाराज थे पहले। So it was just me and him. तो उसमें सिर्फ मैं और वो थे। So I was like, oh, the Maharaj is there, small elevator. तो मैं सोचा वो महाराज है यहाँ, एलिवेटर छोटा है थोड़ा। Slowly moving in India. और भारत में थोड़ा धीरे-धीरे चलता है, कभी-कभी। So I'm thinking, I should say something to this Maharaj. I cannot completely ignore him, तो मैंने सोचा कि मुझे महाराज को कुछ तो कहना होगा, मैं पूरी तरह से उनको ऐसे नकार तो नहीं सकता। That would also seem strange. तो थोड़ा विचित्र लगेगा। So I just said something like in a friendly way, well, Maharaj, nobody said it was going to be easy. तो थोड़े मैंने दोस्ताने तरीके से उनको कहा, महाराज कि किसी ने कहा नहीं था ये इतना आसान है करना। And the Maharaj says, Murali, what's the problem, man? Just chant and dance, go back to Godhead. और उसने कहा, मुरली, क्या समस्या है? बस कीर्तन करो और नाचो और भगवत धाम वापस जाओ। And I was like, what am I, stupid? मैं क्या बेवकूफ हूँ यहाँ? Just chant, dance, go back to Godhead. Why you need all these details, Why are you making it difficult for yourself, बस कीर्तन करो, नाचो और भगवत धाम चले जाओ। क्यों इतना सब चीज़ों को जटिल बना रहे हो यहाँ? So why all the Acharyas, Guru Sada Shastra, why are they explaining all the details? That means it's meant for us to understand it, isn't it? तो ये क्यों गुरु साधु शास्त्र सारे आचार्य इन सारे चीज़ों को विशेष जानकारी हमें दे रहे हैं? क्योंकि ये हमारे समझने के लिए बनाई गई है। Prabhupada said, if I told you really, nobody will join. What you have to do, nobody will really join. प्रभुपाद ने कहा था, अगर मैं असल में आपको ये बता देता कि आपको क्या करना पड़ेगा, तो कोई भी यहाँ पे जुड़ता नहीं। So Prabhupada said, I had to little cheat you, trick you. प्रभुपाद ने कहा कि मुझे थोड़ा ठगना पड़ा, मुझे थोड़ा छल करना just पड़ा। come, chant, dance, take prasad, go back to Godhead. Wow, that sounds fun. That's easy. आओ कीर्तन करो, प्रसाद दो, नाचो और भगवत धाम चले जाओ। बहुत सुनने में बहुत आसान लगा है।
So gradually you realize, okay, there's more to the story, isn't it? और धीरे धीरे हमें समझ में आता है कहानी और भी है, There's more information is required. और भी ज़्यादा जानकारी है यहाँ। So we're trying to get through her question. अभी भी उनके सवाल के हम में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। Yeah, no. Only thing is that when I'm trying to follow all these things and I'm just seeing like is it really possible for me to become simple? Because You're already becoming, every day you're getting more and more humble and more pure and more simple. Every day you're getting better. माता जी पूछ रहे हैं कि क्या इतनी दूषित हूँ मैं, क्या मेरे लिए संभावना है कि मैं कुछ बेहतर हो सकती हूँ? तो गुरुदेव बता रहे हैं प्रत्येक दिन आप और आ रहे हैं, आप सरल होते जा रहे हैं, आप विनम्र होते जा रहे हैं, आप गंभीर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे शुद्ध हो रहे हैं आप। Right, the plane is starting to land. आपका विमान जो है आप नीचे उतर रहा है धीरे धीरे। So you're coming down, तो आप नीचे उतर रहे हैं, coming off the mental platform. अपने ये मन के जो से आप नीचे उतर रहे हैं, You're becoming more peaceful, more, calm down, आप थोड़ा शांत हो रहे हैं, आप शांत होते जाइए, So it's working. काम कर रहा है। It's just like if the doctor gives you medicine, and they say, you have to take it for 10 days, ऐसा कि कोई डॉक्टर आपको कोई दवाई देते हैं और कहते हैं आपको 10 दिन के लिए दवा लेनी है, Then after a couple days, you're like, oh, this is not really working. और कुछ दिनों के बाद हम आके कहते हैं काम नहीं कर रहा, Then you take a few more days, and now all of a sudden you're getting like nice results. और जैसे आप कुछ दिन और देने लगते हैं, आप फिर आप कुछ फल देखना शुरू करते हैं, And then we're like, I don't have to take the rest of those days, और फिर हम सोचते हैं बाकी दिन और लेने का जरूरत नहीं। So you have to take the full prescription, you see? तो हमें पूरे तरीके से सलाह को पालन करना होगा। We're always somehow trying to cheat the system. हम हमेशा व्यवस्था को ठगने का प्रयास करते हैं। This is Krishna's system. ये कृष्ण की व्यवस्था है, We just have to follow it. हमें बस इसका पालन करना है। I always say, I'm thinking, Krishna, he already has everything perfectly figured out. मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि कृष्ण ने पहले ही सारी चीज़ों का पता लगा लिया है, And he knows past, present, and the future. और वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते हैं। And even Arjuna, he couldn't even remember his last life. यहाँ तक कि अर्जुन भी अपने पिछले जन्म को याद नहीं कर पाए थे, What to speak of the future life? और भविष्य के बारे में क्या बात करना। So what are we trying to understand about our past life? तो हम क्या समझने का प्रयास करें हमारे पिछले जीवन के बारे में? Can we understand it? क्या हम समझ सकते हैं? Maybe if you wake up, speaking 12 languages or something. हो सकता है अगर Sometimes आप that happens. कभी-कभी ऐसा हो सकता है कोई जागे और 12 भाषाएं बोलने लगे, तो ऐसा हो सकता है। You hit your head and all of a sudden you're talking like you're from England or something. अचानक से आपका सर कहीं टकराता है और आप ऐसे बोलने लगते हैं जैसे आप इंग्लैंड से हैं। Sometimes that happens. ऐसा भी होता है कई बार। Person goes for the surgery, wake up, and all of a sudden they have British accent. It's like, where's this coming from? अचानक से कोई व्यक्ति सर्जरी में जाता है, ऑपरेशन के बाद उठता है तो ब्रिटिश उच्चारण से वो अंग्रेजी बोलने लगता है, तो ये कैसे होता है? So Krishna knows past, present, and the future. We don't know. तो कृष्ण हमारा भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। We don't know what's best for us. We think we do. हमें नहीं पता हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, हम सोचते हैं हमें पता है। We think nobody knows ourselves better than ourselves. हम सोचते हैं कोई हमें हमसे बेहतर नहीं जानता, Nobody knows what's best for us better than ourselves. कोई भी हमसे बेहतर नहीं जानता हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, But Krishna knows. लेकिन कृष्ण जानते हैं। Krishna already has a plan. कृष्ण के पास पहले से योजना है, He already figured it out. उन्होंने सब कुछ पहले से पता He लगा already लिया है। knows to help us from exactly where we are now to fulfill that plan, to reach the plan. और उन्हें पहले से पता है हम जिस वर्तमान परिस्थिति में हैं, यहाँ से हमें आगे कैसे मदद की जा सकती है ताकि हम अंत तक पहुँच सकें। उनके पास पहले से सारी योजना तैयार There's है, nothing to figure out. कुछ भी हमें पता लगाने की Oh, जरूरत I'm नहीं just है। trying to figure it out. वो मैं पता लगा, So इतना जटिल complicated. है, You don't realize how complicated it is. My life is complicated. आपको पता नहीं है कितना जटिल है, मेरा जीवन बहुत जटिल है, Not so easy like that. इतना आसान नहीं है। In India, this is another thing they say, it's not like that, और भारत में एक और ही मजाकिया बात है, लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। Many times I'm explaining it, everything, just no, it's not like that. कई बार मैं कुछ बताने का प्रयास करता होते हैं नहीं ऐसा नहीं है।
I'm like, no, it's exactly like मैं बोलता हूँ that. ऐसा ही है। No, it's not like that. नहीं ऐसा नहीं है। So Krishna already has it figured out. तो कृष्ण ने सब कुछ पहले से पता लगा लिया है। If we're really smart, really intelligent, we'll just try to find out what is Krishna's plan for us. अगर हम असल में बुद्धिमान हैं, असल में समझदार हैं, तो हम ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कृष्णा के पास हमारे लिए कौन सी योजना है। Should you be married? Should you not be married? Should you do this job or that job or live here or live there? Krishna already has all of those details for you. कि मुझे शादी करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, इस जगह रहना चाहिए, दूसरी जगह रहना चाहिए। कृष्ण ने ये सब पहले से पता लगा लिया है। Krishna not saying, okay, everybody from this day shave your head, you're all sannyasis. कृष्ण ये नहीं कहते कि आज के दिन से सब लोग अपना सर मुड़ाओ, सब लोग सन्यासी बन जाओ। Why you're thinking like this? आप Krishna ऐसा क्यों knows सोचते? everyone's in a process. He knows how to get you through the process. कृष्ण को पता है हम सब प्रक्रिया में, और उनको पता है हमें इस प्रक्रिया में आगे कैसे बढ़ाना है। Well, you know, I don't want to ask Krishna because he may make me shave my head and become sannyasi. I'm not ready for that yet. मैं अभी तैयार नहीं हूँ कृष्ण की योजना का पालन करने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं अगर कृष्ण मुझे सर मुड़ा के सन्यासी बनने के लिए ना कहते। We're not trusting Krishna. हमें कृष्ण में भरोसा नहीं है। Krishna is the most practical personality. कृष्ण सबसे ज्यादा व्यवहारिक व्यक्ति हैं। He's the most qualified to say. वो सबसे ज्यादा योग्य हैं ये कहने के लिए। But we're not even asking him. लेकिन हम उनको पूछ नहीं रहे हैं। Why? क्यों? Because we're trying to figure it out. क्योंकि हम खुद पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। Because we think we have to figure it out, and we think that we can figure it out. क्योंकि हम सोचते हैं क्योंकि हमें ही पता लगाना, और हम ये भी सोचते हैं कि हम ही सिर्फ पता लगा सकते हैं। That is our misunderstanding. ये हमारी गलतफहमी है। This is problem. ये समस्या है। That's why Krishna said, okay, Arjuna, you think you can figure it out? Try to figure it out. इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा, आप सोचते हैं आप पता लगा सकते हैं, पता लगा के देखिए। See how well it works. देखिए कितने अच्छे तरीके से काम करेगा। And then when Arjuna figured out that materially and spiritually this isn't working and it's intolerable, then he said, okay, Krishna, what was your plan? और जब अर्जुन ने ये देखा कि वो आध्यात्मिक और भौतिक रूप से उसकी कोई योजना काम नहीं आ रही और वो सहन के लायक नहीं रह पाया, तो उसने कृष्णा को जाकर पूछा कि कृष्णा आप क्या कह रहे थे? Then he surrendered. तो उसने शरणागत किया। So the only thing is, what is Krishna's plan? एकमात्र सवाल ये है कि कृष्णा की क्या योजना है। And if Krishna is inspiring you, and it really is Krishna's plan, then the Guru and other Vaishnavas will tell you, yes, this is a good plan. और अगर आपको कृष्णा कोई प्रेरणा दे रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये कृष्णा से आ रहा है, तो गुरु कृष्णा आपको बताएंगे कि ये कृष्णा की योजना है। Thanks. All right? You're getting better every day. आप ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे, प्रत्येक दिन Diddy. Slowly. धीरे धीरे। Anybody else? कोई और? Yeah. She's a little attached to the microphone. ये थोड़ी ज़्यादा आसक्त है इस माइक्रोफोन से। I saw she was like trying to hand it over, but it was like an extension of her arm, you know, it already became attached to her hand, you know. ऐसा लगा जब ये माइक दूसरे को थमाने की कोशिश करे थे, ये माइक उनके हाथ का भाग बन गया और देना नहीं चाह रही है किसी को। Some people, Adam's like that. आदम भी ऐसे ही है। You have to get like a screwdriver, you know, आपको स्क्रू ड्राइवर लाना पड़ेगा just to get his fingers off the microphone. इनका उंगली माइक्रोफोन से छुड़ाने के लिए। So the question is, Or pliers, प्लायर लाना पड़ेगा, or hacksaw. कुल्हाड़ी लानी पड़ेगी। ये पेड़ काटने वाला मशीन लाना पड़ेगा। how to be resolute in bhakti and also perform, How to what? to be resolute in bhakti and also perform the material responsibility. How to be resolute in bhakti. How to be resolute in bhakti and also perform the material duties. How to do both bhakti and maya. You can't do both. सवाल ये है कि कैसे है मैं भक्ति में दृढ़ हो सकता हूँ और साथ में अपने भौतिक कर्तव्य को भी निभा सकता हूँ।
तो गुरुदेव ने बताया कि अब दोनों चीज़ें नहीं कर सकते. Only thing you can do is try to spiritualize the activity, and that means engaging it in Krishna's seva. एकमात्र चीज़ आप कर सकते हैं, आप दोनों को आध्यात्मिक बनाइए, यानी कि आप उनको भी कृष्णा की सेवा में लगाइए. Just like Arjuna, he's a military man. जैसे अर्जुन है, वो एक क्षत्रिय है. And Krishna said, I'm asking you to fight, and you're refusing to fight. और कृष्णा कह रहे हैं कि मैं आपको युद्ध करने के लिए कह रहा हूँ और मना कर रहे हैं युद्ध करने से. But by your nature, you're going to be forced to fight anyway. लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम युद्ध करने के लिए मजबूर होना होगा कहीं और. Your nature will force you to fight. तुम्हारा स्वभाव तुमको मजबूर करेगा. So our natures will force us to act according to our nature. तो हमारा स्वभाव हमको जबरदस्ती हम उस स्वभाव के आधार पे कार्य करने को मजबूर कर देगा. So now how to make that activity according to your nature acceptable to Krishna and Krishna consciousness? तो आप कैसे उन गतिविधि को इस तरीके से मोड़ेंगे आपके स्वभाव के आधार पे जो स्वतः आ रही हैं कि वो कृष्णा के द्वारा स्वीकार करने योग्य हो सके. So that same thing you're doing and you're going to do anyway, but how do you make that as an offering to Krishna? That is the art of doing work. तो कैसे जो चीज़ें आप स्वतः स्वाभाविक रूप से करने वाले थे आपके स्वभाव के आधार पे कैसे आप उसको कृष्ण की तरफ मोड़ेंगे, यही है कार्य करने की शैली. It's so funny when devotees they discuss about setting up a varnashram society. ये बहुत हास्यास्पद लगता है जब एक भक्त बात कर रहे थे वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थापित करने के लिए. Yes, we're starting a Daivi varnashram community. दैवी वर्णाश्रम जो है समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं. And this is very nice. ये बहुत अच्छा है. And then everyone who's signing up, everyone says, okay, I'm going to be a brahmana. और जो भी उसमें जुड़ रहा है वो कहता है मैं ब्राह्मण बनूंगा. I bought my string in the market, so I'm a brahmana. मैंने धागा दुकान बाजार में खरीद लिया. अब मैं I know a few shlokas. मैं कुछ श्लोका बोल दूंगा. I got one tambora, you know. कुछ तंबूरा खरीद लूंगा. I got some wooden shoes. लकड़ी के जूते. Click, 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 click. क्लिक क्लिक करके चलो. I got my chadar. और फिर अपना चादर ऐसे लपेट लूंगा. I remember when we first went to Vrindavan, everyone bought the chadar and put it on our head, and we're all walking around like we're like saints already, you know. मुझे याद है वृंदावन में जब भक्त लोग जाते थे वो कुछ एक ऐसा चादर खरीद लेते थे इसको सर ढक के ऐसे चलते थे जैसे खुद साधु बन गए हैं. You know, we're just sitting there. We're just wandering in Vrindavan, you know. बस बैठ के हम वृंदावन में भटक रहे हैं. Like 2 days earlier, you know, you're smoking and taking, you know, taking some narcotics, you know, and all of a sudden the next day you're like sadhu, you know. 2 दिन पहले आप जब पूरा नशा का धूम्रपान कर रहे थे और अगले दिन आप साधु बन गए हैं. Just because you got a chadar on and some wooden shoes, you know. बस एक चादर खरीद के और कुछ खड़ाऊ खरीद लेने से. So one devotee, he came to me and he said, Maharaj, you know, he came with his wooden shoes on and his chadar and acting like a sadhu, and you know, he said, Maharaj, you know, how can I become more humble, you know? तो एक भक्त आया मेरे पास अपना ऐसा चादर लपेट के और खड़ाऊ पहन के और मेरे पास आया, महाराज मैं कैसे और विनम्र भक्त बन सकता हूँ. I said the first thing is take off those wooden shoes. मैंने सबसे पहला चीज कहा अपना ये खड़ाऊ निकालो. Just buy some cheap like rubber, like the cheapest possible shoes you can buy, like the old ladies wear on the train, like this type of chappal, you know. तो सबसे पहले ऐसा चप्पल खरीद के सबसे सस्ता रबर का जो चप्पल मिल सकता है जो बूढ़ी महिला ट्रेन में चढ़ने जाती हैं वो खरीदती हैं पहनती हैं, वैसा कोई सस्ता चप्पल खरीदो जाके. You know, stop walking around in those little rubber shoes instead of the, you know, the Paramahamsa wooden shoes, you know. और ये It's like a swan, you know. और ये बंद करो इस तरह से, ये जो लकड़ी के चप्पल जो है आपको परमहंस वाले जूते जो आपको ऐसे दिखाते हैं कि आप हंस हो, और ये सस्ता रबर का जूता पहन कर आओ. You know, you see this, the actual sadhus, they have just some simple wooden shoes, right? But no, this one is like carved by some artist from Italy, you know. It's like, what is this? ज़्यादातर सामान्यतः कोई साधु जो है कोई सामान्य खड़ाऊ पहन लेते हैं, लेकिन इनका जो खड़ाऊ था ऐसा का जैसे इटली में उसका पूरा
कार्विंग उसका सारा डिज़ाइन तैयार किया गया हो, ऐसा वो खड़ा हो पहन के आया। You know, you're hiring like some Indian guy, you know, just he's paying some rupees to watch your shoes, you know, so nobody steals them, you know. और पैसे दे के किसी भारतीय आदमी को वहाँ खड़े रखते हैं कि आपका जूता कोई देखते रहे, वहाँ पे कोई लेके ना चला जाए। It's like, you know, it's like kind of puffed up, you know. ये दिखाता है कि अहंकारी है। And they're saying, you know, one day those shoes will be worshipped by, you know, generations, you know. और मन में ये सोचते रहेंगे एक दिन ये सारे जूतों को पूरी पीढ़ियाँ आकर इसकी पूजा करेंगी चप्पलों की। It's like getting a little carried away, don't you think, you know? इसका हम थोड़ा ज़्यादा भटकते जा रहे हैं। We don't even realize you're not the body, you know. हम अब तक ये भी साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे, हम ये शरीर नहीं है। Oh, great. Then the next day, you know, he's walking around in these rubber shoes and he was so sad, you know. अगले दिन वो जब ये सस्ता रबर का जूता चप्पल पहन के आया तो वो इतना दुखी था वो। He was like so depressed, you know. पूरा हताश हो गया वो। It's like a lady, you know, you cut off her, you know, ponytail or something, you know, just walking around like, you know, no ponytail, you know. जैसे कोई लड़की है उनकी आप छोटी काट देंगे तो ऐसे निराश हताश होकर चलती रहती है, ये काट दिया, छोटी काट दिया। So then he's walking around. I looked at him and he had these little blue, they were blue, rubber shoes, you know. और मुझे याद है उसने कुछ नीले रबर के जूते पहन के आया वो। And he's just walking around like I'm just an ordinary, you know, blue rubber shoe devotee now. वो ऐसे चल रहा था जैसे मैं भी एक सामान्य नीले चप्पल पहनने वाला भक्त हूँ। And I think I told him maybe you could just not use any shoes, you know, just walk around barefooted or something. मुझे याद है हो सकता है कि शायद मैंने उसको ये कहा हो कि आप शायद खाली पैर ही चलें, बिना चप्पल के ही। Or you put on the T-shirt, I lost my heart in Vrindavan, you know. या आप कुछ लोग टी-शर्ट पहन के आते हैं कि मैंने अपना दिल है वृंदावन में खो दिया है। Put some, lost my heart in Vrindavan. मैंने अपना हृदय वृंदावन में खो दिया। You know, 2 days ago, you don't even know what is Vrindavan. You know? 2 दिन पहले आपको पता भी नहीं था वृंदावन है क्या। Did I answer the question? क्या मैंने I'm getting lost tonight, you know. मैं थोड़ा आज भटकता जा रहा हूँ आज रात। But there's a, you know, even in humor, there's a lot of truth there, you know. तो यहाँ बहुत हंसाने वाली बात है लेकिन इसमें बहुत सत्य भी है। So, the Guru, Vaishnava, they're trying to keep us, you know, humbled out. तो गुरु वैष्णव हमेशा हमें विनम्र बनाए रखने का प्रयास करते हैं। I remember one time I went to see my Gurudev. He was on Padayatra. We were doing Harinam. मुझे याद है एक बार मैं गुरुदेव से मिलने के लिए गया और हम उस समय पदयात्रा कर रहे थे, हरिनाम कर रहे थे। Then I heard he was in one room there. तो मैंने सुना वो एक कमरे में है। So a couple of us, we ran in there to pay our obeisances. हम कुछ लोग भाग के अंदर गए ताकि हम उनको नमस्कार कर सकें। And we're so excited to see Gurudev. We're paying obeisances. तो हम इतने उत्तेजित थे गुरुदेव को देख के, हमने उनको प्रणाम किया। Then when I got up, my head hit the glass table. और जब मैंने अपना सर उठाया तो मेरा सर जो है उनके टेबल के शीशे से टकरा गया। And like everything went flying, you know. और सब कुछ उड़ते हुए बिखर गया वहाँ। And my Gurudev's looking at me like, what a fool, you know. मेरे गुरुदेव मेरे तरफ देख के बोले क्या मूर्ख है ये। And I remember like crawling out like a mouse, you know. और मुझे याद है मैं चूहे की तरह रूम से बाहर निकला रेंगते हुए। I went in there like, and I walked out. मैं अंदर गया ऐसे फूल के, लेकिन बाहर आया चूहे की तरह रेंगते हुए। I felt like such a fool. And he would make this face like, you know, like, and then he would look at everyone like, you know, what a fool, isn't it? He would get like everybody to agree with him, and then everyone's like, yeah. और वो ऐसा चेहरा शकल बनाते थे सबको बताने के लिए क्या मूर्ख है देखो इसकी तरफ, और सभी लोग कहते थे हाँ हाँ कितना बड़ा मूर्ख है देखो इसको। Like painful, you know. बहुत दर्दनाक लगता था ये। देखो देखो इसकी तरफ। So he had a way of like humbling you out. Even he didn't say anything. तो उनके पास तरीका था कैसे हमें विनम्र बनाना है, यहाँ तक कि वो कुछ कहते भी नहीं थे फिर भी हमें विनम्र। Sometimes he would just look at you like, you know, and you just feel like I'm a fool, you know. कभी-कभी वो हमारी तरफ देखते थे और हम महसूस कर पाते जैसे हम कोई मूर्ख हैं। But that's good for us. लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है। I never met anybody in my life
who could do that to me. मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला अपने जीवन में जो मेरे साथ ये कर सकता था. I mean, I may try to be humble and, you know, learn something from somebody, but nobody could, like, just by looking at me, make me feel like a mouse, like running out of the room, you know? तो हो सकता है मैं थोड़ा विनम्र होकर कुछ सीखने का ऐसे प्रयास कर सकता था, लेकिन किसी ने मुझे ऐसा विनम्र नहीं बना सकते थे जो कि मैं पहले ऐसे अहंकारी था और बाद में मुझे उन्होंने ऐसे चूहे की तरह बना दिया. You want me to tell you another story? How I got humbled out? Oh, you like this now, huh? Ah, you like this story? पसंद आ रहा है ये सब कहानी. So we, they're like, now it's on Maharaj, you know? महाराज पे आ रही है इसलिए. Let's see how he handles it, you know? चलिए देखते हैं इन्होंने कैसे झेला है सब चीजों को. Let's see if he'll reveal all of these things to us, you चलिए know? देखते हैं ये सब सच हमें बताएंगे अभी. And then in Bhubaneswar, every day we go out on Harinam. तो भुवनेश्वर में हम प्रत्येक दिन हरिनाम पे जाते थे. And we had like a lot of Western devotees when they would visit, so we were taking them out into the town, and every day we do Harinam, and every day it was becoming more and more like bigger, successful. We're getting more and more people appreciate it. तो इस तरह से भुवनेश्वर में हमेशा जो पश्चिमी देशों से बहुत सारे भक्त आया करते थे, तो हम उनके साथ प्रतिदिन हरिनाम जाया करते थे, और प्रत्येक दिन ये और ज़्यादा सफल होता जा गया और लोग और ज़्यादा जुड़ते थे हरिनाम में. Then we came back to the temple and we're talking to Maharaj. और हम मंदिर वापस आए और हम महाराज से बातें करने And लगे. he's asking, you know, how was the Harinam? पूछ रहे थे हरिनाम कैसा था. And I was saying, you know, Gurudev, you know, so many people are coming, and, you know, I just started like glorifying our Harinam, right? मैंने गुरुदेव को बताना शुरू किया, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और मैंने अपने हमारे हरिनाम का गुणगान करना शुरू कर दिया. And this is growing, and it's getting bigger and bigger and more successful, and ये बड़ा हो रहा Gurudev है, just listening to all of this, you know. ये बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है, और हम और ज़्यादा हरिनाम हमारा सफल हो रहा है, और गुरुदेव वो आसान ध्यान से सुनते And I जा रहे हैं. said, you know, maybe we should just get a bus and we'll be able to do this and that. You know, I'm telling, let's get a bus, you know. और मैं गुरुदेव बताने लगा, हो सकता है हम एक बस ले लेंगे, फिर हम यहाँ ये करेंगे वो करेंगे. मैं गुरुदेव को ऐसे बताने लगा. And then Gurudev, you know, listening to all of this, then he turned to me, he said, Hari Baba, just walk. और गुरुदेव सब चीज़ को सुन रहे थे ध्यान से, और फिर उन्होंने कहा बाद में, अरे बाबा बस चल के जाओ. And I was like, again, you know, become a mouse, you know. फिर से मैं चुहा बन गया. Hari Baba, just walk. अरे बाबा बस पैदल घूमो. You know, we're trying to build a temple. We have so many other things, you know. We do Harinam for a few days. I'm requesting to buy a bus, you know. हम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं हमारे पास. हम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं हमारे पास, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं, और हम कुछ दिन हमारा हरिनाम जो सफल होने लगा कुछ दिन में, और मैं मांग कर रहा हूँ कि हमें एक बस भी खरीदनी चाहिए. So that was very humbling. तो ये बहुत विनम्र बना दिया. You want to hear another one? और सुनना चाहते हैं आप? You love it. You love अच्छा it. लग रहा है, पसंद आ रहा है. So they were going to build a restaurant in the temple. तो मंदिर में एक जो है रेस्टोरेंट बनाने का तैयारी हो रही थी. So we saw some local Indian, you know, in Orissa talking about the restaurant. We said, no, I got some Western devotees. I said, let's really build a restaurant here, you know. तो वहाँ के कुछ लोकल उड़ीसा के भक्त जो है रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने कुछ पश्चिमी भक्तों के साथ मिलकर उनको शुरू किया कि मैं चलिए असल में बात करते हैं कि रेस्टोरेंट कैसे बनाया जाता है. Because they're thinking they'll make it like a Russian style and it will just be some different thing, you know. क्योंकि मुझे हम सोच रहे थे ये उड़ीसा के स्टाइल में कुछ बना देंगे, कुछ अलग ही चीज़ बना देंगे. So we were thinking, let's make it like a really fancy, like Western type of restaurant. तो हम ऐसा सोच रहे थे, हम असल में इसको कुछ पश्चिमी जैसा बहुत ही अद्भुत रेस्टोरेंट बनाने का प्रयास करेंगे. So we were every day meeting, and we had blueprints, and we're like, you know, designing how to make this Western restaurant. You तो know? हर दिन हम बैठते थे, हम मीटिंग करते थे, और हम योजना बनाते थे कि कैसे हम नक्शा बनाएंगे इस रेस्टोरेंट का. And we put a lot of energy, effort into all of these thoughts and designs and drawings and all of this thing, you और हम know. अपना बहुत समय ऊर्जा खर्च कर रहे थे इस सारे डिज़ाइन बनाने में, सारे नक्शे बनाने के लिए. So then one day we're going in with Gurudev to look at the space where they're going to have the restaurant. तो एक दिन हम गुरुदेव के साथ जा रहे थे उस जगह पे जहाँ पर ये रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाना था. And we were just little walking in with Gurudev, and I'm sitting there with the papers and I'm explaining about the restaurant and all of this thing, you know. और हम अंदर घुसने लगे तो और मेरे पास पहले से सारा नक्शा तैयार था, सारे मैंने पेपर तैयार करके रखे थे.
And then Gurudev looks at me and he has this look like, you know, like he's not particularly happy, you know. और फिर गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा और उन्हें इस तरह से ऐसा शकल बना जैसे वो मुझसे खुश नहीं है. That was the first sign that this isn't going to go well. ये मुझे पहला संकेत मिला कि आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है. Because he has this particular look, like he's not appreciating already this conversation. You know what I जब भी mean? वो इस तरह का चेहरा बनाते थे तो पहले ही हम समझ जाते थे कि हम वो उस चीज़ की सराहना नहीं कर रहे हैं जो हम करने के यहाँ प्रयास कर रहे हैं. But I was bold. I'm going to still try to explain it, right? लेकिन मेरे अंदर बहुत हिम्मत थी. मैं फिर भी इसको बताने का प्रयास कर रहा And I get the papers rolled up in my hand, and we can put this here and there, and I'm going through this whole thing, and then finally Maharaja, he looks at me, he said, "Do you know anything about restaurants?" और मैं जब ये सारी चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा था, मैंने अपने सारे नक्शे निकाले, सब कुछ एक एक से बताने का प्रयास किया, ये यहाँ ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए. और गुरुदेव इसको सुनते हुए जब आखिरी में उन्होंने कहा, तुमको कुछ भी पता है रेस्टोरेंट के बारे में? Right? Like I ate in a couple of restaurants, right? That's like my expertise in designing restaurants, you know? कुछ रेस्टोरेंट में बैठ के खा लिए हैं, यही मेरा निपुणता है रेस्टोरेंट बनाने का. So he just says simple way, gives a nice look of not happy, and then just said, "Do you know anything about building a restaurant?" तो उन्होंने बस एक सरल मेरे ऊपर मेरे तरफ देख के तरीके से कहा कि तुमको पता है कि And I just sort of like, I just rolled those papers up, you know, stick them in my back pocket, you know. और फिर मैंने वो सारा पेपर रोल करके अपने पॉकेट में डाल दिया. So, Prabhupada said, if you want to know if Krishna is happy with you, see if your guru is happy with you. प्रभुपाद कहते If हैं you're going in right way, the guru will be happy with you. प्रभुपाद बताते हैं अगर आप ये देखना चाहते हैं कृष्ण आपसे प्रसन्न है या नहीं, तो आप ये देखिए गुरु आपसे प्रसन्न है या नहीं. So sometimes I look at my guru and I say, oh, he's not happy with me. कभी-कभी मैं अपने He's not appreciating. कभी-कभी मैं अपने गुरुदेव की तरफ देखता था और मैं समझ पाता था कि वो मुझसे खुश नहीं है और मेरी सराहना नहीं कर रहे हैं. Sometimes, you'd be thinking some negative thing and criticizing and just being like pessimistic and critical, and sometimes he will catch you and he knows, what are you doing? And he'd be like, hey, what are you doing, कभी-कभी कई बार हम जो है हमारे मन में कुछ नकारात्मक चीज़ें चल रही होती है, हम कुछ शिकायत कर रहे होते हैं, हम लोगों के अंदर दोष निकाल रहे होते हैं और इस तरह से गलत चीज़ें हमारे मन में चल रही होती है और हम इस तरह से नकारात्मक तरीके सोच रहे होते हैं. और गुरुदेव क्योंकि वो सब चीज़ें जानते हैं और वो उसी वक्त हमें पकड़ लेते हैं जब हम ये चीज़ें कर रहे हो, तब वो हमें देख के कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम? Like you're not in nice consciousness, you have like bad attitude, जैसे आपकी चेतना सही नहीं है, आपका रवैया You're ठीक नहीं sitting है, there like, आप ऐसे बैठे हैं. and all of a sudden I look around and like my guru's like looking right at me, और अचानक से मैं जब देखता हूँ तो गुरुदेव सीधा मेरे तरफ ही देख रहे हैं. Like, what are you doing, ऐसे कह रहे कि तुम कर क्या रहे हो? So I never met anybody who could do that to me, मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो मेरे साथ ऐसा कर सकता था. I didn't want to displease him. मैं कभी उनको नाखुश नहीं करना चाहता था. So anyway, that was my experience. ये मेरा अनुभव था. Many times he doesn't have to say anything. He could just look at you and okay, he's not appreciating, he's not liking something. कई बार उन्हें हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो बस हमारी तरफ देखते थे और हम समझ जाते थे कि वो हमसे खुश नहीं है, हमारी सराहना नहीं कर रहे हैं. Sometimes you automatically know what is it. कभी-कभी आप स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे कि क्या है ये. But sometimes it's more subtle. कभी-कभी ये बहुत सूक्ष्म होता है. And then you think, okay, I must be doing something wrong. तब आप समझ पाते हैं कि अवश्य मैं कुछ गलती कर रहा हूँ. Now it's up to me to try to pray and try to be introspective and try to understand what isn't right, what isn't according to the standard of Vaishnavas and what they're expecting. What am I doing wrong? That has to be understood and adjusted. अब ये मेरा कर्तव्य है ये पता लगाना, ये प्रार्थना करना, भीतरी छानबीन करके ये समझने का प्रयास करना कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और वैष्णव साधुओं के आधार पे क्या असल स्टैंडर्ड है और मैं उस स्टैंडर्ड में कहाँ कम आ रहा हूँ. We have to acknowledge it, और हमें realize it, सराहना करनी होगी, इसको साक्षात्कार करना होगा, be dissatisfied by it as well. और हमें उससे असंतुष्ट भी होना होगा. And just say it's unacceptable. और हमें स्वीकार करना होगा कि हम And I see why this is unacceptable.
और हमें देखना हम देख पाएंगे Some कि हम things are easier than others to understand, कुछ चीज़ें हम आसानी से समझ पाएंगे and some things are easier than others to change. और कुछ चीज़ें जो हैं हम बदल सकते हैं आसानी से, Because these things are very deep rooted also. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत गहराई तक हैं। Anybody else? Anyone? Any last points? कोई आखिरी बात? One more question. When there is no association and no shelter of the temple, and when one is still not initiated, and they have only books and video lectures, then will there be any advancement in Krishna consciousness? Without association, Prabhupada says association means hearing, directly hearing. तो प्रभु का सवाल ये है कि अगर कोई भक्त किसी के पास संग नहीं है और किसी मंदिर के आश्रय में नहीं है, उसने दीक्षा नहीं ली है और उसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद की कुछ किताबें हैं और घर में कुछ पूजन करते हैं, तो इस तरह से क्या वो आध्यात्मिक जीवन में कुछ उन्नति प्राप्त कर सकते हैं? तो गुरुदेव ने बताया संग का मतलब है श्रवण करना। Then Prabhupada said to live separate from this type of association and hearing, and you think you can be Krishna conscious, you're living in a phantasmagoria. बात कहते हैं अगर आप किसी संग के बिना, श्रवण कीर्तन के बिना आप आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं, इसका मतलब आप किसी कल्पना की दुनिया में रह रहे हैं। So this satsanga, sadhu sanga, direct association and hearing is most essential priority for someone who is serious about spiritual life. तो सत्संग, साधु संग और सीधे सीधे साधु के मुख से श्रवण करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो गंभीर है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए। And even if you're reading Srila Prabhupada's books and listening to his books and tapes, he's emphasizing the same thing there in his books and his lectures. और अगर आप श्रील प्रभुपाद की किताबें, श्रील प्रभुपाद के वीडियो टेप्स, लेक्चर्स देख रहे हैं, तो वहाँ भी वो इसी बात को जोर दे रहे हैं। So you say, oh, I'm just reading Prabhupada's books. Well, if we're reading the books and not following what Prabhupada's recommending and saying is essential to advance in spiritual life, then what is the meaning of your listening to the videos and reading the books? तो अगर आप किताबों को पढ़ रहे हैं और किताबों में ये निर्देश दिया जा रहा है और अगर आप उन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं जो प्रभुपाद उन किताबों में दे रहे हैं, तो आपका क्या फ़ायदा इन सारे जो आप बात कर रहे हैं कि आप किताबें पढ़ रहे हैं या वीडियो या लेक्चर सुन रहे हैं प्रभुपाद के? Krishna can do and undo anything. कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं। So it's based on our strength of desire. तो हमारी इच्छा शक्ति पे आधारित है ये। So you have to cry, Guru Krishna, Prabhupada, and that they'll make the best possible arrangement and situation that we can associate and hear Harikatha, Krishna-katha. तो हमें कृष्णा, प्रभुपाद और गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था कर सके कि हमें संग मिल सके जहाँ हम श्रवण कीर्तन कर सकें। Prabhupada said there is no material impediment or obstacle that can stop the flow of bhakti or devotional service to the Lord. प्रभुपाद बताते हैं कोई भी भौतिक चीज़ ऐसी नहीं बनी है जो कि भक्ति के प्रक्रिया को रोक सके। All right? Did I answer? क्या मैंने उत्तर दिया? Srivas, are you satisfied? श्रीवास, आप संतुष्ट हैं? All right. Srivas is satisfied. That means we're all satisfied. श्रीवास अगर संतुष्ट हैं तो हम सब भी संतुष्ट हैं। Okay? Any last burning thing? कोई आखिरी जलती हुई? Everyone's good? सब ठीक है? All right. Thank you everyone for your time and your attention and participation. धन्यवाद आप सभी के समय का, आप सभी ने सहयोग किया। Thank you for praying for me. I appreciate that. मेरे लिए प्रार्थना I करने need के लिए मैं mercy इसकी also. सराहना करता हूँ। मुझे भी कृपा की जरूरत I'm है। also beggar for mercy. मैं भी कृपा का भिखारी हूँ। Now you see how I got humbled out big time. तो अब आप देखिए मैं भी किस तरह से विनम्र हुआ बहुत बड़े-बड़े समय में। I'm not telling you to do something I didn't have to go through. मैं आपको वो करने के लिए नहीं कह रहा जो मैंने खुद नहीं किया। I also had to go through all of that. मुझे भी इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा। Sometimes little pinching, little uncomfortable, कभी-कभी मुझे थोड़ा चुभता था, कभी मुझे असुविधाजनक लगता but था। purifying and humbling. लेकिन शुद्ध कर रहा था और मुझे विनम्र बना रहा And था। that's required. और ये आवश्यक है। Thank you very much. Appreciate it. Srila Prabhupada ki, Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Jai Prabhupada Gurudeva ki. Hare Krishna. What do you have? क्या है आपके पास? Acha. Today this girl, very sick, better.
Oh, This girl is the birthday. huh? This Lisa, Oh, baby. this is birthday? Yeah. Oh, का अच्छा. जन्मदिन है अच्छा. Did you cut it? You have a knife? क्या आपके पास चाकू है काटने के लिए? How old are you now? आप कितने साल की हो चुकी हैं? कितने साल की हो चुकी हैं आप? And this also child? ये आपके